Your block 4 is about content-based methodology. Yesterday we discussed regarding the content-based methodology in history and political science. And today we have to discuss regarding content-based methodology in geography and economics. And in this module, there are certain geography content and economics content has given. And for those contents, how we can prepare the learning activities, learning objectives, and assessment questions. It is given. Okay. So when we think regarding the content-based methodology, the thing is that we have to know the content properly, and another thing is that we have to know how to translate this content to the children according to the method. Methodically, how we will translate the content. So for that purpose, when we are talking regarding the methods, it's not only about the selection of the method, but to find out the proper learning objectives. And on the basis of the learning objectives, we have to design the learning activities. And at last, we have to prepare the assessment questions also on the basis of the learning objectives. Yesterday already we have discussed from the history and political science point of view. And so that's why I think today you will understand, because not much more difference is there for history, political science, and geography and economics. But the thing is that content is different. So when content is different means teaching learning materials, designing of the teaching learning materials, designing of the activity, all this matters a lot. How we can prepare all those things. Okay. So ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରା material module ନାହିଁ, ତୁମମାନେ module ଦେଖିନ ପରା? ନା Block 4 ମ୍ୟାମ୍ module କିଏ ଦେଖିଛ? Block 4 module କିଏ ଦେଖିଛ? କ'ଣ ଅଛି? କୋଉ basis ରେ ଆମକୁ discussion କରିବାକୁ ପଡିବ? ସବୁ ବହି ଆମକୁ ମିଳି ଯାଇଛି, ଏଇ ବହିଟା ଗୋଟେ ମିଳିନି। ଆଚ୍ଛା, ଖାଲି block 4 ଟା ମିଳିନି? ନା ନା, ଏଇ ଯୋଉ 42 ଯୋଉ 142 ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟଟା ଏଇଟା ମିଳିନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆର କୌଣସି module ବି ପାଇନ ତମମାନେ? ନା ନା, ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ କେତେ ଜଣ ପାଇଛ, କେତେ ଜଣ ପାଇନ? ଆଜ୍ଞା। ଅଛି, ମୁଁ ତମର ସେ module କୁ ବେସ୍ କରିକି ଆଜି କିଛି PPT ମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛି। ଏଟାକୁ ଦେଖିଲେ ତମେ ଟିକେ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝି ପାରିବ, ଯେହେତୁ ତମ ପାଖେ module ନାହିଁ କହୁଥିଲ। So on the basis content also I have covered today. So I am going to share my PPT. Just any one of you confirm that PPT is visible. ମ୍ୟାମ୍ ଆଜି ବ୍ଲକ୍ 4 ପଢା ହବ? ହଁ, ଦେଖାଗଲା? PPT ଦେଖାଯାଉଛି? ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍, ଦେଖାଯାଉଛି। Okay, okay, thank you. So এই block 4 ରେ ଆମକୁ discussion କରିବାର ଅଛି content based pedagogy in geography and economics. ତମେ ଯଦି ପୁରା ଟୋଟାଲ ମଡ୍ୟୁଲ କୁ ଦେଖିବ, ଏ ଟୋଟାଲ ମଡ୍ୟୁଲ ରେ ତମର ୟୁନିଟ୍ 14 और यूनिट 15 discuss contents from geography. Unit 16 and 17 focus on contents from economics. Each unit deal with brief presentation of content followed by teaching learning strategy. Already ମୁଁ ତମକୁ ଯେମିତି କହି ସାରିଛି ଯେ ଖାଲି content matter କରୁନି, content କ'ଣ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇବା, that matters a lot. So that is that we have to more focus on the teaching learning strategy. Okay, so ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କଥା କହୁଛେ, ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ କଭର କରୁଛି ନା, ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହଉଛି how we will formulate the learning objectives. Okay, so yesterday already we have learned how we are going to formulate the learning objectives. କିଏ କହିବ ମତେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଲେଖୁଛେ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା? Is there any certain rules and regulations for writing the learning objective? Can anyone respond?
आमे गतकाली ही डिस्कशन कले केमती लर्निंग ऑब्जेक्टिव लिखिबा बुझी पारनो कंटेंट बेस्ड मैडम कंटेंट ऑफ कोर्स कंटेंट बेस्ड किंतु आउ किछि नियम अछि लर्निंग ऑब्जेक्टिव लिखिबा पई डोमेन सब यस मैम डोमेन को बेस करके यस गोटे जनरल ऑब्जेक्ट आ लिखा गोटे हबो आ गोटे स्पेसिफिक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट लिखिबा ऑब्जेक्ट लिखिबा बेले जनरल ऑब्जेक्टिव लिखिबा और स्पेसिफिक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखिबा ऑब्जेक्ट जनरल ऑब्जेक्टिव काहा को बेस करके लिखिबा आज्ञा सब्जेक्ट को बेस स्किल फोर फोर स्किल टॉपिक मैम को बेस जनरल करिवे ऑब्जेक्ट मैम जेतबे फाइव लिखिबा फोर फॉर्मूला स्किल तांकर डेवलप केमती हबो ता ऊपर फोकस देबा जनरल ऑब्जेक्ट लिखला बेले 5 फॉर्मूला को बेस करके और general objective स्पेसिफिक we are ऑब्जेक्ट writing from the relating to the subject relating to the whole chapter okay but specific objective we are going to write on the basis of the content we are going to teach within that class सेही 45 मिनिट्स रे आमे जो टॉपिक पढौचे जेति की कंटेंट कवर करिया को जाउचे ताकू बेस करके आमे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ओके आउ किछि रूल अछि okay ठीक अछि again today I am going to explain whatever the मैम 5 फॉर्मूला 5 फॉर्मूला को बेस करके कोन 5 फॉर्मूला 5 रो लेसन प्लान कला बेले कहू हम ताको 5 मॉडल 5 फॉर्मूला किछि नाही तो ए देखो ए पीपीटी टा देखा जाउची स्किल ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स यस मैम देखा जाउची Yes, ma'am. okay see here certain points I have mentioned here how we will write the objectives here objective means I am talking regarding the learning objectives okay whether that is a general objective or specific objective okay all are called as the learning objectives but mostly we focus on the specific objective so a objective must be written always in a statement format are you able to understand what is statement format whenever whether in which language whether it is Odia or in English whenever we are going to write the statement we have to write the objective in a statement format it means that it never be a interrogative sentence object must not be a exclamatory sentence we should not write the objective in a negative form okay it must be written in a statement form it must be a assertive sentence understand बुझी पारलो आउ गोटे तार रूल होची ऑब्जेक्टिव लिखिबार आउ गोटे रूल होची इट मस्ट बी प्रिसाइज मींस इट मस्ट बी शॉर्ट सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल इट मींस we will write the objective it is nearly 4 to 5 lines not like that okay that is not the proper way of writing the objective must be precise it means it must be simple short and understand it must have a meaning okay we must able to understand it we should not take the use of the ornamental language at the time of writing the objective ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଲେଖୁଛେ ସେଟା ଯେତେ ଛୋଟ ହେଇଥିବ ସିମ୍ପଲ ହେଇଥିବ ବୁଝି ପାରୁଥିବ ବୁଝା ଯାଉଥିବ ସେମିତି ଆମେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ it must be precise and simple okay we should not use the ornamental language vocabulary double negative sentence we should not write the objectives in a double negative sentence okay and another thing is that whatever we are going to write in the objective it must be measurable measurable means here as we know how we are going to write the objective on the basis of it we have to write the questions also like that आमे जानिले जेमते ट्रेडिशनल अप्रोच रे हो कि हमर ऑब्जेक्टिव को अचीव करला भलिया आमे ताको बेस करके क्वेश्चन मध्ये तयारी करबा so you must write the objective in such a way that we must able to frame a question according to that objective so it must be measurable it must be achievable सेटा पिला मानको द्वारा हेई पारुथिबो गोटे अवास्तव कथा unachievable things we should not write in the form of a objective आमे एमिति गोटे ऑब्जेक्टिव नबा जोटा कि पिला मानको द्वारा केबे भी अचीव पिला माने सेटा केबे भी करि पारु नथिबे not like that highly ambitious
and we are writing something imaginary things in a objective. Okay, we should not write like that. So a objective must be measurable, must be achievable. Okay, and it must be based on content. Content को नेकी जोड़ा कि specific objective जेते वाला हम कहूचे जो content पढ़ोचे ताकू ही base करके हमारा objective टा हेतिबा दरकार. It must not beyond the content. Okay, whatever will come to my mind, I will write as an objective, not like that. Whatever the contents I am going to cover to teach within that period, I have to write the objective on the basis of that content. Okay, so these are the certain points we have to keep in our mind at the time of writing the objective. बुझी पारला समझते? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. किछि आ रिलेटेड और किछि डाउट अछि? ऑब्जेक्टिव लेखिया रिलेटेड और किछि तमरो डाउट अछि कि? काली हम एक्शन वर्ब गुडा को यूज करथले जेंते हमें कहले कि इट मस्ट बी बेस्ड ऑन डोमेन्स. डोमेन्स को नै कि हिछि माने केमिति हमर नॉलेज लेवल हेतिला हमें कोन कोन एक्शन वर्ब यूज करिवा, अंडरस्टैंडिंग थिले हमें कोन कोन एक्शन वर्ब यूज करिवा, स्किल थिले कोन करिवा, एप्लीकेशन थिले कोन करिवा. ऑलरेडी हमें काली विषय टिके डिस्कशन करिचे. ओके, सेम थिंग on the based on domains means we have to take into consideration of the action verb. आमे ऑब्जेक्टिव लेखिला बेले पिला माने लेखि थांदी जे पिला माने जानिमे, विद्यार्थी माने शिक्षार्थी माने जानिमे. इट्स अ रॉन्ग. जानिमे हाउ यू विल जने जानि छिने नै तमे केम जानिबो, हाउ यू विल मेजर इट. तो सेति पय आमे कहू जे एवरीथिंग मस्ट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एक्शन. कहिबे, लेखिबे, करि परिबे एमति आमे एक्शन वर्ब रे लेखिबा दरकार. जानिमा जने जानि छिने नै इट इज वी कैन नॉट नेवर मेजर. ओके, बुझी परलो समस्त बुझी परला रिलेटेड आ किछि डाउट अछि? मैम आउ थोड़े टिके मैम खाली कहे से जे जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रेडी करे. General objective, it is based on the subject and that whole topic. Specific objective is related to the particular content we are going to teach in a particular period. Yes? Yes, ma'am. PPT शो करनी मैडम. कौन हला? PPT show करनी मैडम. PPT देखा जाउनी? No, ma'am. एबे देखा जाउथला? हाँ टिके पूर्व तो देखा जाउथला ଏବେ देखा जाउनी. Okay. Okay, again I will send it. देखा गला? देखा जाउची? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes ma'am. So these all are the skills of writing the objectives. तापर हमें नेक्स्ट आसीबा जे हमें जानितिए जे जेतेबेले हमें ऑब्जेक्टिव लिखुचे again on the basis of the objectives in the evaluation part we have to frame the questions. Yes or no? काली हमें कहउतले Yes, जे ma'am. ट्रेडिशनल अप्रोच रे कहउचे those questions are called as the objective type and objective based questions. So हमें एबे वर्तमान टिके डिस्कशन करबा हमें केमिति क्वेश्चन फ्रेम करिया. What are the different types of questions are there? तो हमें निजे कहिलो what are the different types of questions are there? Mostly, ma'am, हमें यूज करथुवा लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप एंड ऑब्जेक्ट टाइप. 4 types. And open ended, ma'am. Open ended भी गोटे रोचे. Okay. जोटे कि पॉपुलर यूज करा होची How बेसी. to हाँ बेसी मात्रा रे एगुडा यूज करा हुए. अच्छा आउ किए किछि कहबो रिगार्डिंग क्वेश्चन? ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି knowledge मैम based. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. filling the blank. Fill in the blanks. Comprehensive. Comprehensive. यस Okay. नो क्वेश्चन. Yes or no question? Yes. So
different type of questions are there, and questions are also categorized on the basis of the different area. Okay, suppose we can say standardized and teacher made. बुझी पारछो आमे जेतेबेले क्वेश्चन को कहू जेतेबेले केवल टीचर माने नॉर्मल टीचर जेतेबेले क्लास रे पिला मानको क्वेश्चन तैयारी करन आमे सेटा को टीचर मेड क्वेश्चंस किंतु स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस व्हेन ए ग्रुप ऑफ experts will sit and prepare the questions on the basis of certain norms, then it is called as a standardized questions. Standardized test we go or teacher made test we go. Okay, सेमती जदी on the basis of that questions are two types, but again on the basis of answers there are certain questions which have the specific answers, then it is called as the close ended questions. Yes, but there are certain questions which have the many answers. It means the students can answer from their own experience, then those are called as the open ended questions. And again on the basis of the domain also questions are different types, as already we discussed: knowledge level question, understanding level question, skill based question, application based question. Then on the basis of the length of the answer, whether the answer is there in one word or in one sentence or in a essay type. So on the basis of the answer also the questions are different types, as like essay type question, short answer type question, very short answer type question, objective type question. Okay, again objective type questions are many types, as yes or no, match the following, multiple choice, choose the correct answer, change the underlined word. Okay, yes or no. So like this different type of objective type questions are also there. So the different types of questions are there, and at the time of teaching we are going to ask different types of questions. I mean path padhila if you will observe, total whole class is only based on the question. आमे विभिन्न प्रकार क्वेश्चन पचारे कि ही आमे क्लास रे पाठ पढै थाउ, जेमते आमे कहूचे इंट्रोडक्शन आमे क्वेश्चन पचारू, दोज आर कॉल्ड एज द इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस. At the time of teaching also, presentation part we are going to ask questions. Okay, and again in evaluation we are going to ask questions. So different type of questions are there, and as a teacher we must have the knowledge regarding the question, and framing a question is also a skill. Okay, it's a very difficult skill, how you can frame a proper question at the appropriate time. Okay, so teacher has to take more care at the time of preparing the question. को stage रे को प्रकार question पचरा हबो, से question टा केमति appropriate हबो, we have to take more concern about it. Understand? तो हमरो रहला objectives और types of question. Then आमे तापरे जोटा कि आमे फर्स्ट रे मु आज भी कहूतिली, जे फर्स्ट रे आमे आज डिस्कशन करिवा ज्योग्राफी रो. पीपीटी देखा जाउची ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, so when आमे जेतले कहूचे टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी, जस्ट यू सी इन दिस स्लाइड, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी जेतले आमे कहूचे, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी इंक्लूड्स फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. Then asla कोन हमें ऑब्जेक्टिव फ्रेम करिवारे कोन सिखिले. Then for every objective we have to plan a activity which is called as the teaching learning activity for transaction of learning experience. जो जेते हमें ऑब्जेक्टिव नहीं थिबा, it means that हमर जहा जहा उद्देश्य लेके हम क्लास को जाय छे, प्रत्येक गोटे कंटेंट पाई ये सब कंटेंट हो कि कंटेंट रो जो बेस करके हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव लिखिते ताको बेस करके हम गोटे लर्निंग एक्टिविटी प्लान करिया को पड़िबो, एंड बाय हेल्प ऑफ दोस लर्निंग एक्टिविटीज वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट द कंटेंट. ओके, then after completion of the content, after transaction of the content, we are going to frame the assessment questions. So today these are the three areas: learning objectives, learning activities, or assessment questions. On these three areas we have to discuss from geography and economic point of view. Okay, a slide ta देखिलो समस्त टिके भलो रे देखि नियो, ताल then you will not get confused when you will proceed forward.
टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी अंडर रे कोन आसुची तीनटा जिंस आसुची गोटे लर्निंग ऑब्जेक्टिव गोटे लर्निंग एक्टिविटीज आ गोटे ला असेसमेंट क्वेश्चंस then we will come to the content part whatever the contents is going to include in this module we will touch all those points देखिलो समझते then we will come what are the contents are there content based methodology pertaining to geography related हमर ए मॉड्यूल रे को कंटेंट गुडा को फोकस करा है जैसे तमे यूनिट 48 रे देखिबो ओनली इंपोर्टेंस इज गिवन रिगार्डिंग द फिजिकल एनवायरनमेंट के फिजिकल एनवायरनमेंट इंडिया रो फिजिकल एनवायरनमेंट ऊपर फोकस करा है आ अंडर रे 6 टा टॉपिक अछि जेमति इंडिया रो लोकेशन और साइज मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया monsoon distribution of natural vegetation and need for conservation of natural vegetation and wildlife ए सबु एरिया को फोकस करिकी तमरो कंटेंट अछि आ कंटेंट गुडा त हम एठी डिस्कशन करि परिबानी बट जदि हम बाकी मॉड्यूल थांदा तमे देखि नै थांदो पाखरे जदि मॉड्यूल थांदा तमे खोली के देखि थांदो जे व्हाट आर द मेन कंटेंट्स आर दे काहे कि ना हमें कंटेंट गुडा को देखिले हमें डिस्कशन करियो जे हमें ताको लर्निंग एक्टिविटी केमति प्लान करिवा सपोज इंडिया रो लोकेशन और साइज को हमें गोटे टॉपिक को नबा ए जो यूनिट 14 रे 6 टा टॉपिक अछि सेतिर फर्स्ट टॉपिक ता होची तमरो इंडिया रो लोकेशन और साइज देखा जाउची ना पीपीटी देखा जाउची आज्ञा मैम Yes, Yes, ma'am. madam. यस कल देखो इंडिया रो लोकेशन और साइज हला इंडिया रो लोकेशन और साइज रे हमें टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी हमें आपे कोन करबा सपोज मोटे एग्जांपल नै छी जे इंडिया रो लोकेशन और साइज पई हमर टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी कोन रही स्ट्रेटजी कोन रहिबो एथिरे टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी रे हमें जानिले जे हमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिखिबा और ले टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज करबा और असेसमेंट क्वेश्चंस करबा देन यू कम टू हाउ वी विल फ्रेम द लर्निंग टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स तो जेते बेले हमें ए टॉपिक ता पढौ छे इंडिया रो साइज और लोकेशन हमर ऑब्जेक्टिव मुख्यतः कोन कोन आसीबो तो इति लेखि छि मु appreciate the vastness of the country the children will able to know about the vastness of the country they will able to describe the relative and obsolete location of our country they will able to recall the latitudinal and longitudinal extent of the country able to explain the significance of central location of our country they will able to describe the size of the country order the place of our country with respect to size area and size okay just you mark what are the action verbs are used to writing these objectives मते के कहिलो ए जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव गुडा को लिखा आइछि एथिरे एक्शन वर्ब गुडा को कोन कोन लिखा आइछि आ सेटा को काहा अंडर रे आसीबो Describe, Describe, recall, explain, yes explain, recall. yes indicate, पेट देखो हमें वर्तमान जो जो कथा हमें जो डिस्कशन कले जे लर्निंग ऑब्जेक्टिव ता सब बेले हमरो स्टेटमेंट फॉर्मेट रे रहबा दरकार जस्ट यू सी वेदर इट इज देयर इन स्टेटमेंट फॉर्मेट और नॉट एटा स्टेटमेंट फॉर्मेट रे अछि ना नाही इंटरोगेटिव सेंटेंस हेइ छि की हेइ छि कोटा एथिरे कोटा इंटरोगेटिव सेंटेंस अछि No, ma'am. No. Statement. yes No, ma'am. सब गुडा को स्टेटमेंट फॉर्मेट रे अछि हैला तापरे फर्स्ट होचे हमें प्रथमे आरंभ करिबा एक्शन वर्ब हैला तो जदि देखिए हमें सब गुडा एक्शन वर्ब डिस्क्राइब रिकॉल एक्सप्लेन देन ऑर्डर indicate establish compute these all are the action verbs हैला so एक गुडा को हमें देखि कि we can identify the objectives are based on which domain को domain को लेके लिखा है छी हमें इथरे सेटा को एटा को देखि कि हमें आइडेंटिफाई करि परबा के कहि परियो माने सपोज टेक explain ता कहां को डोमेन अंडर आसुची सॉरी नॉट डोमेन टाइप को नॉलेज अंडरस्टैंडिंग स्किल एप्लीकेशन को बेस करके पुनो अंडरस्टैंडिंग understanding, Understand. understanding okay indicate the indicate the regions for Knowledge. selection of particular longitude huh? understanding ହେବ ନା indicate
Indicate the region for selection of particular longitude as a standard meridian for India. Application based. No, that will come under skill. Scale based. Then they identify a particular place in a map. That is also skill. Identify kariba, indicate kariba, that will come under the skill. Semti Okay, describe kariba, understanding. Understanding. Okay. Understand. Yes. Appreciate the vastness of the country. Eta kothre asibo? effective domain response. Yes, that will come under the affective domain. Okay, good. So, just by seeing this, you can observe that how we can write the objectives. Okay, ताहले बे वर्तमान जानी पारलो आमे ऑब्जेक्टिव केमिति लिखिबा ऑब्जेक्टिव को देखि के आमे केमिति जानी परिबा जेटे को टाइप रो ऑब्जेक्टिव एटा हैला then we will come to the teaching learning activities हैला एथरे जदि हमें ए ऑब्जेक्टिव नेइचे आकु बेस करके हमें टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी कोन करबा हैला एथरे देखो हमें आपे कोन टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस नै परिबा जेमते हमें जानि छे मोस्टली ज्योग्राफी ए टीचिंग विदाउट मैप इज नॉट पॉसिबल ओके तो हमें ज्योग्राफी हमें और इंडिया रो साइज और लोकेशन कथा कहू वी आर गोइंग टू टीच रिगार्डिंग इंडिया रो लोकेशन और साइज we can take the use of the world political map and in the whole world map we will identify where is India okay India ro location kouthi then Asia ro bhi Asia or India political map India physical map we can take the globe atlas okay we can prepare the worksheets for it then ame ethre charts dekhei pariba regarding identifying the latitude and longitude then which newspaper cutting nahi pariba so these are mostly the resources mostly we can take the use to prepare the teaching learning activities so एइथे देखो activity हमें केमती प्लान करिबा हमें कोन activity हमें जेमिति कहले जेते हमें ऑब्जेक्टिव नै जे ताकू बेस करी कि हमें activity प्लान करिबा तो एइथे मु जस्ट एग्जांपल देइ छी जे हमें मनरो पांचटा activity प्लान करिबा कोन ना acquainting students with basic concept उडा केमती आइडेंटिफाई करिवे ताकू बेस करके गोटे एक्टिविटी करिबा मैप रीडिंग करि परिवे ताकू गोटे बेस करके गोटे एक्टिविटी करिबा जदि एथिरा हमें इंडिया विषय जेहेतु कहूचे इंडिया रो ये ताकू डाटा किबा ग्राफ अछि सेटा को केमती इंटरप्रेट करि परिवे जदि डाटा ग्राफ हमें देखौचे एज ए टीचिंग टीएलएम then how they will interpret they will able to understand ताकू रिलेट करि गोटे एक्टिविटी प्लान करिबा okay any project work kariba map skill kariba so these are the teaching learning activities we can plan if we are going to prepare the learning objectives बुझी परला बे teaching learning activity कोन जदि हमें जो कंटेंट नउचे ताकू बेस करिकि हमें कोन एक्टिविटी प्लान कर परे नॉट लाइक दैट मु जोठेटा तुमको एटा मेंशन करछि पांचटा माने पांचटा you can prepare many just for your understanding I have given 5 examples ହେଲା Yes, ma'am. okay age activity पांचटा ही मु केवल लिखिछि you can add more also not like that these 5 will many more activities and it depends on the creativity of the teacher कोन करि परछन्ती it depends on his innovation and creation हमें केते भलो रे पिलां को पढेबा हमें केमिति एक्टिविटी प्लान करिबा it is also the creativity of the teacher okay तो हमको एमिति टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी प्लान करिबा को पड़िबो समस्त बुझी पारला टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी कोन टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कोन हमें केमती रिसोर्सेस यूज करके डिफरेंट एक्टिविटी प्लान करि परिबा एनी डाउट जदि भीतर अछि को देन वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चंस तारा डाउट अछि किछि Clear, ma'am. okay so we will move to questions okay what is assessment questions हमें ऑलरेडी डिस्कशन कले केते प्रकार क्वेश्चन अछि केमिति कोन कोन अछि मनकर ए टॉपिक को इंडिया रा साइज और लोकेशन पढेला बेले
व्हाट इज आमे क्वेश्चन कोन करि परिबा असेसमेंट क्वेश्चंस कोन आसी परिबो जेमिति आमे इथे इंडिया र कथा जेतला आमे इंडिया मैप रीडिंग कथा कहूचे आमे प्रथमे पिलंग पचारि परिबा व्हाट इज द ग्लोब what are the poles what is equator differentiate between longitudes and latitudes uh, and then on an outline map of India find out the standard meridian what is prime meridian what is standard meridian differentiate between obsolete location and relative location so these are the things on the basis of which we can frame the questions सेमिति आउ गुटे मनकर सपोज आमे टॉपिक नै छे आउट एग्जांपल दे छे मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया तमरो अछि कंटेंट को भी तमरे मॉड्यूल रे डिस्कशन करा आइछि मनकर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया तमे मते को फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया जतला हम डिस्कशन करछे अंडर रे कोन आसीबो already we quickly regarding the diversity of Indian physical features is much good. Okay, everything is there in India. Okay, in India there are the mountains. Largest mountain is there. Largest desert is there. Plateau is there. Largest plateau is there. Plain areas are there. All type of different vegetations are there. So all that major teaching learning points will come under jemdi ki Himalayan mountain region bhitere nihati rahibo Himadri Himachal Sivalix and mountain peaks jemdi northern plains Gangetic plains Brahmaputra plains peninsular plateau Malwa plateau Deccan plateau Indian desert coastal plains islands these all will be the major teaching learning point under the physical features of India. ओके जदि ता पय हम थ्री लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स तयारी करबा जदि हम एई फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढिया को जाउचे ता पय हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स तयारी करबा देखो केतरा फॉर एग्जांपल मु तम पय एते लिखि छी जस्ट सी कोन एथ्री लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम करि परिबा जदि इंडिया रो फिजिकल फीचर्स गुडा को पढौचे ताला हम कोन करि परिबा आइडेंटिफाई एंड लोकेट द मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया describe the broad ideas and familiarities between various graphical regions of the country. State the major landforms, features, and underlying geographical structure. Explain the association of various landforms with various rock minerals. Describe unique features of various physiographical division of the country. Estimate the complementary nature of this physiographical division. Okay, express the reason responsible for occurrence of this physiographical region. So एगुडा को मुख्यतः हमरो आसीबो तार ऑब्जेक्टिव जेतेबेला हम इंडियन फिजिकल फीचर्स एगु पढौचे आउरी अधिक आसीबो आमे आउरी करबे जस्ट जेतेटा मु माने गोटे स्लाइड रे रहिबो ताको बेस करके तुमु कहिछि माने बट यू कैन राइट मेनी मोर देयर इज नो लिमिटेशन आल्सो what are the objectives we can write when we are going to cover a content and it also differ from teacher to teacher just for your understanding I have mentioned all this तमे एठे मते को मु तुमको स्लाइड देखुने तमे एठे को आमे जते इंडिया रा फिजिकल फीचर्स पढोचे एथरे आमे लर्निंग रिसोर्सेस कोन नै परिबा कोन हमर लर्निंग रिसोर्सेस रही हुई मैप हां ज्योग्राफिकल मैप मैम yes geographical map कोन एमति अछि कि आमे कहले फिजिकल मैप एटलास मैडम नहीं होगो yes atlas और नहीं आरटी परिबा मॉडल भी कुछ नहीं होगो फिजिकल मैप आरटी नहीं मॉडल परिबा जेमति ग्लोब ग्लोब नहीं परिबा हां आउ कोन नहीं परिबा चैट भी मिलिबो जदी इंडिया रो तो common सेडा for teach to any geography topic आउ कुछ नहीं परिबा नेट किसी कंटेंट नहीं परिबा जो वीडियो किसी क्लिप्स yes वीडियो क्लिप्स नहीं के मैं नहीं की देखि परिबा आउ मॉडल मैम कहार मॉडल नहीं की देखि परिबा विभिन्न ग्रह हां हमर टॉपिक कोन महाकाशर अछि सुनियो आमे परा
पढ़ेबो जाउची फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया आमे एटे ग्रह मानकर नै कि देखैबा No, ma'am. हमर टॉपिक होची फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ला बेला में काहर मॉडल नै परिबा ये कहबो ये कहूथिलो मॉडल नै कि पढ़ेबा तमे चिंता करो एटे कोन मॉडल नै कि हम पढ़ेबा ओके तमे भाबी कि मते कुओ मॉडल से नबा माउंटेन रेंज हिल्स ये नचेत भी आमे फिजिकल फीचर्स पढ़ला बेले मॉडल तैयारी करि पाड़िबा हमरो जो क्रस्ट मेंटल कोर हमर अर्थ रो डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ सरफेस ले करि परिबा ता बेस हमें करि परिबा यस मैम हमें क्रस्ट लैंडस्लाइड मैडम मेंटल कोर रो मॉडल तैयारी करि के देखै परिबा हे परियो मैडम यस तार हमें लैंडस्लाइड चाहिए मैडम मॉडल करि के देखै परिबा एमते बहुत किछि करि परिबा हले तो एठी मु लर्निंग रिसोर्सेस भी मेंशन करिछि जेमति हमें इंडिया रो मैप देखै परिबा एटलस देखै परिबा वर्कशीट्स तैयारी करि परिबा आ वर्कशीट्स माने बुझुछो तुम माने समस्त कोन व्हाट इज वर्कशीट नो मैम Yes, के ma'am. कहिबो मते वर्कशीट्स कोन बुझुछो कहिले मते व्हाट इज वर्कशीट्स तमे माने स्कूल रे पढ़ेला बेले वर्कशीट तैयारी करि पिला मानू दउछो ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାମ୍ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିବା ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ଆମେ ସେଇଥିରେ ମେନସନ୍ କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। अच्छा आउ किसी के ग्रुप कहबो एक्टिविटी मैम मैम किसी ग्रुप एक्टिविटी दिया जाए वर्कशीट रे ग्रुप गोटे एक्टिविटी एक्टिविटी कला परे मैडम केते कोन हेई पाला तारो माने टिके जानिया पई वर्कशीट दे माने काम दिया होय छुआ मानक सेही वर्कशीट माध्यम रे अच्छा गुड समस्त बढ़िया कहिजो जे जेतेबेले हमें गोटे किछि गोटे पढेइले किंतु तार अप्लाइड लेवल जिंस गुडाक हला गोटे कंटेंट पढेइजे ताकू रिलेट करिके ताकू तार एक्सटेंशन ताडू अधिका तार रिलेटेड विषय से माने आउ कोन जानि पारुचंती ताकू क्वेश्चन फ्रेम इन द फ्रेम ऑफ ए क्वेश्चन नॉट इन द फ्रेम ऑफ ए ग्रुप एक्टिविटी तो हमें एगुडा को बेस करके हमें वर्कशीट्स तैयारी करू है तो वर्कशीट्स को मध्य गोटे लर्निंग रिसोर्सेस बोली कहा जाए बिकॉज़ by help of that they will understand again अगर आउ टिके अंडरस्टैंडिंग लेवल टिके अधिका बढ़े पिला मानकर अंडरस्टैंडिंग लेवल भलो हुए तो हमें वर्कशीट्स को भी हम गोटे लर्निंग रिसोर्स बोली हमें कहू बोले तापरे सेमिति हमें गोटे किछि इमेज देखे परिया चित्र देखे परिया वर्किंग मॉडल देखे परिया तो दी ई रिसोर्सेस जेमति जने कहले तमे हम वीडियो देखे परिया आजिकली मेनी ई रिसोर्सेस आर अवेलेबल तो हमें सेगुडा को कलेक्ट करिक मध्य हमें देखे परिया तो एथिरे हमें एक्टिविटी कोन करिबा लर्निंग थ्रू द मैप गोटे एक्टिविटी करि परिबा सेमती 3D मॉडल 3D इमेज एगुडा को नै कि हमें एक्टिविटी करि परिबा डिक्शनरी रीडिंग जेमती कि जानि छ हमर सब्जेक्ट वाइज डिक्शनरी डिफर करू जेमती ज्योग्राफी डिक्शनरी इज डिफरेंट एने ज्योग्राफी रो केते वोकैबुलरी अछि जोडा कि हमें मोस्टली पाइबा हमर ज्योग्राफी डिक्शनरी रे सो हमरे ज्योग्राफी डिक्शनरी के हमें जो वर्ड गुडा कर पिला माने मीनिंग बुझी पाउना न्यू वर्ड आसुची ज्योग्राफी रे हमें सेगुडा को यूज करके गोटे एक्टिविटी कंडक्ट करि परिबा मैप रीडिंग विषय भी किछि हमें एक्टिविटी करि परिबा प्रोजेक्ट वर्क देखि भी एक्टिविटी करि परिबा सो दीज आर द एक्टिविटीज वी कैन प्लान एट द टाइम ऑफ टीचिंग ऑल दिस टॉपिक फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया तापर आसे क्वेश्चन इतरा हमें कोन क्वेश्चन करि परिबा को तमे एकदम दिन कहिछि मु मोरो ये रु खाली जस्ट एग्जांपल पय कहिछि जे हमें क्वेश्चन तांको पचारिबा मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया on the outline map of India. Mark the physical feature of India. Use the appropriate colors. हमें map रे को color कौन use करू हमें land part ପାଇଁ को color use करा जाए water ପାଇଁ को color use करा जाए mountain ପାଇଁ को color use करा जाए Gangetic plain area वाला में को color use करू plateau ପାଇଁ को color use करा जाए ओके ताकू बेस करके भी हमें क्वेश्चन पचारिबा and what are the important ranges of the Himalayan ranges is a question. What are the major river systems of the northern plain? A river system kono differentiate between Malwa Plateau, Deccan Plateau, differentiate between Western Ghat plains and Eastern Ghat plains. So like this we can frame the question on the basis of those learning objectives. Hala?
तबे वर्तमान गोटे आइडिया पाउछो जेतेबेले आमे टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी कहूचे हमर ऑब्जेक्टिव एक्टिविटी आउ क्वेश्चन ए तीनटा केमती हमर पैरेलली रहिबा दरकार मैच करूथिबा दरकार बुझी पाछो समस्त पीपीटी देखा जाउची आज्ञा यस मैम। मैम। Yes, ma'am. ओके ताले को आमे दीटा ज्योग्राफी टॉपिक डिस्कशन करले तमरो 6टा ना 7टा खंडे टॉपिक देइची सब गुड़ाक तो मुझे रिलेटेड डिस्कसन करेंगे पीपीटी करी कि यही सब टॉपिक जितेटा होता कले बहुत गुड़ाए हम आम तो सब गुड़ा डिस्कसन करें आउ गोटे तुम ड्रेनेज सिस्टम्स ऑफ इंडिया बुझुछ जे आम जे ज्योग्राफी टीचर मैंने आम ज्योग्राफी कंटेंट उपर प्रथम मास्टर रहा दरकार किए कह ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया रे कौन कौन आसो तुम मान समस्त ज्योग्राफी सब्जेक्ट थिला Yes, ma'am. High school. मैट्रिक हाई स्कूल पर्यंत तो अच्छा मन अच्छी सब आउ हायर क्लास किए पढ़ी ज्योग्राफी +2 कि +3 रे No, ma'am. पढ़ी ना ठीक अछि तार डिस्टर्बेंस साउंड होची ना मते खाली सुना साउंड तम मानु सुना जाउची Yes, ma'am. बुझी मैम। ये माने जगबंधु सर ଟିକେ अनम्यूट म्यूट अच्छा କରନ୍ତୁ म्यूट ପ୍ଲିଜ। करी दियो जदि किछि कहू ना ताले अनम्यूट कर दे दीटा मोबाइल कि दीटा गैजेट पाखा पाखी रहिले एमितिया साउंड आसे तमे म्यूट करी दियो तो ठीक अच्छे आम ड्रेनेज सिस्टम्स इन इंडिया विषय डिस्कसन करवा ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया माने आमर आसीबो सेथिरे कोन रिवर्स आसीबो रिवर सिस्टम आसीबो रिवर भी आमर दी प्रकार अछि गोटा अछि हिमालयन रिवर पेनिनसुला रिवर लेक्स हां इंपोर्टेंस ऑफ रिवर सिस्टम ए सब जिंस गुडा कवर होछि आमर ए ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया ता पई लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कोन कोन अछि एथिरे आमे को एरिया को फोकस करके आमे लर्निंग ऑब्जेक्टिव तयारी करि परिबा एथिरे केतेटा लिखिछि देखो जदि आम यही ड्रेनेज सिस्टम विषय पढ़ौचे आम लिखिपर जे दे कैन क्लासिफाइज द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ आवर कंट्री जमी आम कहले आम दी प्रकार रिवर्स अच्छी रिवर गुड़ाक भी आम जाचे आम बहुत रिवर अच्छी जोगुड़ाक हिमालय रु बाहरी आउ बहुत गुड़ा रिवर अच्छी अलग माउंटेन्स रु बाहरी आउ केते रिवर अच्छी बंगोपसागर रे पड़ी आउ केते अच्छी अरेबियन सी रे पड़ी ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे कैन क्लासिफाई द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ आवर कंट्री they can describe the features of different drainage system of the country they can explain the causes of river pollution in our country discuss the issue of minimizing river pollution in our country indicate the importance of rivers to the regions they occupy तो एगुड़ाक मोस्टली मुझे नहीं जिते गुड़ाक सब नहीं को लेवल री ऑब्जेक्टिव गुड़ाक प्राय को लेवल रही कहल ये अंडरस्टैंडिंग yes सब गुड़ाक प्राय अंडरस्टैंडिंग लेवल रो अछि एक्सप्लेन डिस्कस इंडिकेट टा गोटे अछि जे सेटा स्किल रे आसीबो इथरे otherwise discuss explain describe classify these all will come under the understanding level objectives अरे समस्त बुझी परछो तो मैम आमे जतरे प्लान करबा केतेटा ऑब्जेक्टिव लेखिबा अब मु ऑलरेडी कहली देयर इज नो लिमिटेशन सेमती किछि नाही जे टॉपिक तमे अनुसार एतिकी ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक रूल आसी सेमती किछि नाही हला जे एतेटा ही करिवो इट डिपेंड्स ऑन द टीचर Limited time भितरे हमें करिवो हाँ बस जेतिकी कंटेंट कवर करूचो ताकू बेस करिके कोन हेई पारुची ताकू देखिके लिखियो तमर 4टा हे पारे 5टा हे पारे 6टा हे पारे किमा केतल मिनी तमर 3टा भी खाली लर्निंग ऑब्जेक्टिव हे पारे सेमिति किछि रूल नाही जे एतेटा ही होबा दरकार किंतु हमें मोस्टली फोकस करिवा हमर तो नॉलेज लेवल निहाती रहइबो अंडरस्टैंडिंग लेवल रहइबो सब बेले एप्लीकेशन लेवल आसीबो बोली माने नाही आउ स्किल लेवल भी सब बेले आसीबो बोली माने नो किंतु अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑब्जेक्टिव हमर निहाती सब बेले आसीबो और नॉलेज लेवल आसीबो on the basis of the topic हमें decide करबा जे आर स्किल लेवल एप्लीकेशन लेवल होई परिबो कि ना बुझी परलो
ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ओके ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। तो एठी देख हां एठी हमें कोन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज कोन करबा टीचिंग विथ वॉल मैप प्रोजेक्ट वर्क डिस्कशन मैप स्किल से एक्टिविटी गुडा जहाँ हमें एबे वर्तमान ज्योग्राफी ऑलरेडी दीटा टॉपिक हमें डिस्कशन कलेनी तमे जानि पारुथबो एतरे जे हमें केमिति एक्टिविटी प्लान करूचे केमिति क्वेश्चन भी हेई पारुची हां यदि क्वेश्चन गुडा एठी रिवर सिस्टम को देखिबा व्हाट आर द मेजर रिवर सिस्टम इन इंडिया वेयर डज इंडस राइज where does the Brahmaputra and the sun rise that Tapi flows into where is the Dal lake where why देखो यही सब क्वेश्चन गुडा को लेवल रो क्वेश्चन अछि देखो जे तमे व्हाट लगे कि क्वेश्चन करबा एटा को knowledge लेवल रो क्वेश्चन knowledge हबो नॉलेज लेवल knowledge है नॉलेज फेर हेले where more than knowledge है ना Knowledge. knowledge yes then why Understanding. Understanding level. अंडरस्टैंडिंग understanding अच्छा मार्क द लेवल रिवर्स कोठी माने आइडेंटिफाई करो मैप रे नर्मदा रिवर कोठी अछि झेलम रिवर कोठी अछि देन एटा कोन रासिबो Skill. Skill. स्किल yes skill रासिबो मैप पॉइंटिंग विल अंडर द स्किल ओके ताले में गोटे क्लियर आइडिया पाइलो हमें केमती एक्टिविटी लर्निंग ऑब्जेक्टिव केमती लेखिया एक्टिविटी कोन करबा आज्ञा असेसमेंट क्वेश्चन कोन करबा ओके आज्ञा मैम। सेमती तमरा मानसून ऊपर भी अछि कंटेंट मानसून ऊपर भी गोटे कंटेंट अछि आउ डिस्कशन करबा ज्योग्राफी रो ना जीवा इकोनॉमिक्स को जीवा ए मानसून विषय डिस्कशन करबा ना ऑलरेडी यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अरे मैम रेस्पॉन्ड करो नहले करबा आज्ञा तमे मैम कहले डिस्कशन कर दो मैडम। करबा आज्ञा मैम कर दियंतु आज्ञा मैम यार मॉनसून डिस्कशन करंतु ओके ओके ठीक अछि करबा तमे जदी कहूछ करबा आज्ञा देखो मानसून तमरा गोटे कंटेंट भी अछि सेथिरा हमर लर्निंग ऑब्जेक्टिव कोन हेई परिबो तो टीचिंग लर्निंग स्टडीज एथिरा हमें लिखे स्टूडेंट्स विल एबल टू डिस्क्राइब एक्सप्लेन मु सब गुडा को अंडरस्टैंडिंग लेवल रो ही नै छी काहे ना मानसून रे हमर से माने मानसून कोन जानिमे मानसून माने बुझुछ व्हाट विल कम ऑन मानसून माने को टॉपिक प्राय आसवा अंडर रे मौसुमी वायु प्रवाह जलवायु regarding the climate है ना regarding the climate so it needs to describe the mechanism that leads to the formation of Indian monsoon हमर इंडियन मानसून केमिति फॉर्मेशन होची से विषय रे माने कहि परिबे एक्सप्लेन द सीजनल वेरिएशन इन द क्लाइमेट कंडीशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री describe the characteristics of dry spells and break in monsoon explain the concept of variability of rainfall okay discuss the reasons for monsoon as a unifying bond okay ए सब गुडा को लिखा है प्राय सब गुडा को अंडरस्टैंडिंग लेवल रो ही अछि हैला तो एइथर हम जानि छ हमर इंडिया गोटे कंट्री हेले भी हमर सीजन वाइज that there is a lot of variation is there in India their climate condition north and south is exactly opposite like this coastal area or temperature and the hilly areas temperature is totally different तो ए सब जिंस गुडा विषय रे ताकर मोस्टली अंडरस्टैंडिंग आसीबो पिला माने आमे अंडरस्टैंडिंग को बेसी फोकस करूचे जेतेबेले हमरे मानसून कथा आसुचे एथिरे टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज कोन हेई परिबो एक्टिविटीज रे मु लिखिची to familiar with words like atmospheric pressure high pressure low pressure different pressure belts wind pressure gradient planetary winds कोन trade wind कोन westerlies कोन relative humidity कोन हैला ए सब गुडा को टर्म गुडा को विषय रे पिला माने प्रथमे नॉलेज पाइबे okay because these are the new vocabulary and new concept for the children atmospheric pressure कोन से माने जानिबे on the basis of the pressure केमते हमें different area divide करिचे pressure belt कोन wind कोन ए गुडा कर नुवा अर्थ मानकर concept knowledge आसीबो हैला different rainfall विषय रे जानिमे ना आउ मैप इंटीग्रेशन ग्रुप एक्टिविटी रे आकु नै कि गोटे ग्रुप एक्टिविटी करि परिबा ग्रुप डिस्कशन करि परिबा प्रोजेक्ट वर्क देई परिबा मैप स्किल हमें करि परिबा मैप रीडिंग करि परिबा so these are the activities we can plan at the time of teaching this topic monsoon la are related question कोन आसीबो they will able to differentiate between high pressure and low pressure area okay how many pressure belts are there on the earth surface they can tell okay
explain the Farewell's law तांकर Farewell's को law कौन अछि सेटा कहि परिबे planetary wind कौन कहि परिबे westerlies कौन कहि परिबे what are westerlies differentiate between the E Nino and La Nina जेते rainfall रो ना विषय रे कहि परिबे हैला explain western disturbance and tropical cyclone explain the monsoon and pulsatory movements तो एगुड़ाक विषय रे माने जोड़ा कि नुआ नुआ कांसेप्ट ए ना गुड़ाक पिलांक पई नुआ थिबो ए सब विषय रे हमें अधिका फोकस करबा हमें एगुड़ाक लर्निंग ऑब्जेक्टिव रे भी नबा आ एगुड़ाक हमें क्वेश्चन कला बेले भी तयारी करबा मैम पीपीटी तो शो करूनी करूनी कोन नेटवर्क इश्यू रहले बंद हो जाय किछि भी शो करूनी नो मैम नो मैम ଏବେ କଟିଗଲା ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ ହେଇଛି ଟିକେ रह बारंबार मझिरे कटि जाउछि एबे कोला यस यस मैम मैम अच्छा आ गोटे भी तमरो अछि ज्योग्राफी रा गोटे कंटेंट भी अछि जे नेचुरल वेजिटेशन डिफरेंट नेचुरल वेजिटेशन ऊपर ता ऊपर भी करि एटा डिस्कशन करबे ना जिबा इकोनॉमिक्स टॉपिक को जिबा तमरो ज्योग्राफी गुडा को बहुत अछि इकोनॉमिक्स भी बहुत अछि माने केवल कंटेंट गुडा को पूरा अधिक फोकस देछि ए मॉड्यूल टारे तमरो ब्लॉक 4 रे किंतु कंटेंट ओनली नॉट फ्रॉम कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम ऑल दिस टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू ओके पर एटा डिस्कशन करबा नेचुरल वेजिटेशन ना जानि परिबो परे मॉड्यूल आगे देखले जानि हम परिबो डिस्कशन मैम कर दियंदु करबा ठीक अछि देखो नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया कोन बुझुछ तमे नेचुरल वेजिटेशन माने तमे कहलो मते तृणभूमि खाली तृणभूमि मैम प्राकृतिक तृणभूमि यस केते प्रकार हमर माने लोक मानकर लिविंग अछि केते प्रकार बायोडायवर्सिटी केते प्रकार वेजिटेशन केते वे रे लोक माने डिफरेंट रीजन हमर नेचुरल फॉरेस्ट कोन कोन अछि लोकंकर जीवन शैली केमिति अलग जगह को जगह बदलिले केमिति अलग ए सब आसीबो हमर नेचुरल वेजिटेशन हैला फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हां डिफरेंट रीजन्स बायोडायवर्सिटी फैक्टर्स रेस्पोंसिबल फॉर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशनल स्ट्रेटजी फॉर नेचुरल वेजिटेशन तो एगुडा को मुख्यतः टॉपिक आसीबो अंडर नेचुरल वेजिटेशन आ एथि पई जदि हमें ऑब्जेक्टिव बाहर करबा ऑब्जेक्टिव रे एठे मु एठे मेंशन करिछि तम पई जे आइडेंटिफाई द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द नेचुरल वेजिटेशन को फैक्टर गुडा को हमर गोटे नेचुरल वेजिटेशन को आइडेंटिफाई करूछि से माने से फैक्टर गुडा को आइडेंटिफाई करि परिबे एक्सप्लेन द रिसोर्सेस sorry explain the reasons for distribution of natural vegetation in the country okay काहे कि जो फैक्टर गुडा को डिफर करू हम कंट्री रे काहे कि गोटे कंट्री हेले भी विभिन्न प्रकार नेचुरल वेजिटेशन काहे कि अछि सेटा से माने एक्सप्लेन करि परिबे एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन क्लाइमेट को नेचुरल वेजिटेशन रो कोन लिंक अछि रिलेशन अछि ताको एनालाइज करि परिबे लिस्ट द नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट आमे नेचुरल वेजिटेशन को नै कि हम कंट्री रे केते बेल्ट अछि सेउडा विषय रे कहि परिबे डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ डिफरेंट वेजिटेशन बेल्ट्स आइडेंटिफाई द ट्रीज ऑफ डिफरेंट वेजिटेशन बेल्ट वेजिटेशन अलग हेले केमिति हमर विभिन्न प्रकार गच्छ जो देखा जाय एला सब केमिति अलगा हे जाय सेगुडा को से गच्छ गुडा कर ना गच्छ गुडा को भी आइडेंटिफाई करि परिबे सो दीज आर द मेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ता पय जदि हमें देखिबा कोन हमें एटा जदि पढिला बेले हमें कोन कोन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज करि परिबा ना कोन दे कैन डिस्कस इन क्लास वी कैन कंडक्ट ए डिस्कशन इन क्लासरूम हला एटा को भी हमें थ्रू सीडी और वीडियो द्वारा भी पढै परिबा मैप द्वारा पढै परिबा प्रोजेक्ट वर्क करि परिबा मैप स्किल करि परिबा दीज आर द कॉमन जोडा कि सबुथिरा हमें मेंशन करिचे वर्तमान एक्टिविटी गुडा करी हला सेम असेसमेंट क्वेश्चन कोन करि परिबा mention the factors which determine the natural vegetation in India. What is the relationship between temperature and vegetation? Name the important vegetation belts in India. Distinguish between evergreen and desert forest. Describe the mountain vegetation of the Himalaya. ना एगुडा को भी प्राय ददि देखिबो केवल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग लेवल रो लेखा हेछि
ओके तो भाବୁची तुम एते गुडा डिस्कशन कला बेले तुमर गोटे ओवरऑल आइडिया आसिलानी हला आमे ज्योग्राफी रे कोन कोन एक्टिविटी मुख्यतः प्लान करू ऑब्जेक्टिव केमिति लिखू असेसमेंट क्वेश्चन आमे केमिति करिबा यस अरे मु सुना जाउची तो अच्छा तो समस्ते यस मैम ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ हाँ रेस्पोंड करो नहले मु भाबुची जे मु खाली कहूची किछि जदि डाउट अछि एति रिलेटेड मते कुहो नचेत आमे जिबा इकोनॉमिक्स को जिबा काहे ना से भी गुडाई टॉपिक अछि से विषय रे भी टिके डिस्कशन करिवा मैम एथिरा आ गोटे एबे भी जोटा हमें डिस्कशन करले मैडम तो कोन सेथिरे कहले ऑब्जेक्टिव मु कहली एबे जोटा हमें डिस्कशन करले हमें हां ଏବେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଇଏ କଲେ ତ ସେଇଟାରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଗୁଡାକ ଟିକେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏବଂ ସ୍କିଲ୍ ବେସ୍ ରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ କେବଳ ନଲେଜ ଉପରକୁ ଗଲା ଭଳି ଲାଗିଲା ନା ସେଇଟା ନାଇଁ ଅଲଗା नॉलेज ଅଲଗା नहीं एठे खाली तो नॉलेज नहीं नॉलेज लेवल मेंशन द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन एटा नॉलेज आसीबो नेम आसीबो किंतु अंडरस्टैंडिंग लेवल अछि डिस्टिंग्विश बिटवीन एवरग्रीन एंड डेजर्ट फॉरेस्ट एटा अंडरस्टैंडिंग ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ମୋର କହିବା କଥା ମ୍ୟାଡମ डिस्क्राइब द ମାନେ नहीं नहीं मु एक्चुअली सुनो तम पे सब गुडा तो लेखिनी मु खाली जस्ट तमर अंडरस्टैंडिंग पे लिखिची हला हमें आउरी लेखि पारिबा मु आगुन कहूची तुमको जे एटा हमें ଆଜ୍ଞା जहां ଆଜ୍ଞା मु एटा लिखिची दीज आर नॉट द फाइनल किंतु एटा मेंशन नेम एगुडा के सब आसीबो नॉलेज रे किंतु डिस्टिंग्विश डिस्क्राइब द माउंटेन वेजिटेशन ऑफ द हिमालय एटा आसीबो कोन अंडरस्टैंडिंग रे हला ଆଜ୍ଞା एथिरे भी ଆଜ୍ଞା तमे माने स्किल लेवल एप्लीकेशन लेवल भी नहीं पारिबो हला सेमिति किछि नाही जे मु एठी भी जहां मेंशन करछि दोज आर द ओनली आई एम नॉट लाइक दैट मु तुमको से कथाटा आगुर कहूछि जे जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई हैव मेंशन फ्यू ନା ନା ମ୍ୟାଡମ ସେଟା କଥା ମୁଁ କହୁନି ମ୍ୟାଡମ ମୁଁ ଖାଲି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମାନେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଯୋଉ ବେସ୍ ରେ ଆମେ ନେଉଛୁ ସେଇ ବେସ୍ ରେ କେବଳ ଆସେସମେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହବ ନା ଅଲଗା କିଛି ବି ହେଇପାରିବ ମ୍ୟାଡମ ତମ ଭଏସ ଶୁଣା ଗଲାନି ମତେ ଆଉ ମ୍ୟାଡମ ମୁଁ କହିବା କଥା ଯୋଉ ମାନେ ଆମେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ବେସ୍ ରେ ନଉଛୁ କେବଳ ସେଇ ତାକୁ ବେସ୍ ବେସ୍ କୁ କରିକି ନେଇକିରି କ୍वेଶ୍चन ଆମେ ହବ ହଁ ଆଜ୍ଞା ନା ଅଲଗା ତାକୁ କିଛି ବେସ୍ ବେସ୍ ରେ ନେଇକିରି ना 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 आमे कहले परा हमर से दीटा भीतर लिंक रहिबा दरकार काहे आमे जो उद्देश्य नै कि काम करछ आमे ताकू धरि कि हम इवैल्यूएशन करिबा ना ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା हैना तो हमर लिंक रहिबो ऑब्जेक्टिव को असेसमेंट क्वेश्चन भीतर निहाती लिंक रहिबो हैला मु तमर पई केवल अंडरस्टैंडिंग में केते लेखि जे एथिरे कोडा रिलेट करूची कोडा करूनी एटा खाली तमे क्वेश्चन गुडा को केमिति करा जाय बुझो आउ ऑब्जेक्टिव केमिति लेखा जाय बुझो ताकू आखि आगे रखी कि तयारी करिछि हैला एटा मु एठे तमर तो लेसन प्लान करिनी ना ले तमे तो लेसन प्लान करिवो कोन ओवरऑल एते ऑब्जेक्टिव नै परिवो एते नै ना परिवोनी मैडम दीटा तीनटा आसीबो ओके यस मैम तो आमे जिबा एबे इकोनॉमिक्स को जिबा इकोनॉमिक्स डिस्कशन करिया हैला घंटाटे तो हे गलानी हमर आउ जो इकोनॉमिक्स रे भी गुडाई टॉपिक अछि तो ओवरऑल ज्योग्राफी ऊपर टिके आईडिया आसला केमति करिवा कोन करिवा ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ यस मैम ओके नेक्स्ट हमें जिबा इकोनॉमिक्स कार सब्जेक्ट थिला एठी के पढिचो हायर लेवल रे मैम मोर के थिला ऑनर्स यस मैम अनर्स थिला ताले तुम जानि परिबो जहा सबु हमर जो थिला इकोनॉमिक्स रो मेन इंपोर्टेंट टॉपिक गुडा को काली भी हमें डिस्कशन करूथिले जेमि हमर मेन स्कोप रे आसुला कोन कोन इकोनॉमिक्स रो स्कोप रे मु काली कहूथिली ने तुमको हमर कोन मुख्यतः आसे को टॉपिक गुडा को मुख्यतः हमर इकोनॉमिक्स अंडर आसे जेमि माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स मनी बैंकिंग पब्लिक फाइनेंस तापर इंटरनेशनल ट्रेड ओके सेमि हमर स्टैटिस्टिक्स आसे इकोनॉमिक्स रे सो दीज आर द मेन एरियाज our economics is a new subject जेमति काली जी मु कहउथि it's a new subject it's a subject of 19th century and it's a very interesting subject आर बहुत गुडाई कांसेप्ट जोडा कि हमर स्कूल रो बही रे प्राय कवरेज हुएनी मुख्यतः जो माने इकोनॉमिक्स पढ़ी नथांती तांकर भी ए बेसिक कांसेप्ट गुडा ऊपर आईडिया नथाय हैना किंतु इकोनॉमिक्स को बहुत फोकस दबा दरकार हमर सोशल साइंस रे आ सेहिथरे भी हम इकोनॉमिक्स पढेला बेला हम केमिति पढेबा
मिनिमम जिनस गुड़ाक कौन कौन दरकार आम से विषय डिस्कसन करवा काली मु तुमको माइक्रो स्किल गुड़ाक कहूली अरे काली मु तुमको पढ़ेला बेले माइक्रो स्किल गुड़ाक कही ये रेस्पॉन्ड करो डिस्कशन करथिले ना ना मैम तुम आउ मन थरे रहूनी कि कौन डिस्कशन करथि आउ थे कहिदेबी आ जहा कहले को आउ थे कहि दियंतु यस କରିଥିଲେ ନା मैम ନାଇଁ ମୁଁ ହଁ ନା ନାଇଁ ପଚାରୁଛି କହି ତ ଦେବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଇକୋନॉमिक्स विषय କିଛି डिस्कशन करला पर ଆମେ सेटा बुझिबा एना दैट इज आल्सो इंपोर्टेंट एट द टाइम ऑफ टीचिंग एंड आल्सो प्लानिंग हैना से माइक्रो स्किल उडा को पूरे तम मानकर क्लियर अंडरस्टैंडिंग करबा दरकार हां को पीपीटी बंद हो जाइए कोन खाली पीपीटी बंद हो जाई कहउछ एबे देखा जाउनी ଆସୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଶୋ vegetation କରୁଛି ମ୍ୟାଡାମ vegetation ଶୋ କରୁଛି ମ୍ୟାଡାମ। ଶୋ କରୁଛି ମ୍ୟାଡାମ କିନ୍ତୁ ଟପିକ ଅନୁସାରେ ନାହିଁ ପେଜ ଟା ସେଇଟା ଟିକେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ओहो एबे इकोनॉमिक्स रो आसुनी ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ नो मैम। ओ ନାଇଁ मु तो ମ୍ୟାଡ଼ାମ ओपन करछि इकोनॉमिक्स रो ओ ये ताले बंद हो जाई ଆସିନି। गोटे मिनिट गोटे एबे देखा गला यस मैम ଆସିଲା देखा गला ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ओके तमे एठी इकोनॉमिक्स रो जहा जहा तमरे मॉड्यूल रे किछि टॉपिक अछि हमें सेडा के विषय डिस्कशन करबा जेमिति हमें कहले कि मेजर इकोनॉमिक इश्यूज गुडा को विषय रे देछि हां मेजर इकोनॉमिक इश्यू और जेमिति पोवर्टी विषय रे अछि ग्लोबलाइजेशन विषय रे अछि सस्टेनेबल डेवलपमेंट विषय रे अछि हैला एडा तो कॉमन टॉपिक तमे विषय निश्चय जानिथिबो पोवर्टी कौन ग्लोबलाइजेशन कौन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन कॉमन टॉपिक गुडा इकोनॉमिक्स पिला न हेले भी एडा को बुझी परिबो समस्ते ना बुझी परनो कि कहबो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन अरे कहबो कि ना जानि पारुनो ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ पूरा ओके ओके ठीक अछि हां ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली कौन ना then there is no restriction among the countries regarding the inviting the investment and trade all these things then it is called as a concept of globalization किंतु हमर आगुर कोन दिखतला हमर जो वर्ल्ड लेवल रे वर्ल्ड रे जेतेबेले कंट्री भितरे किछ हमें रेस्ट्रिक्शन इंपोज करू regarding the trade, regarding establishing industries, factories, NGOs, then it is called as a non-globalized. But nowadays, the modern concept in economics is the globalization. Globalization in every field, in every sector, different countries work together and they learn from each other and they share with each other. And that concept is called as a globalization. And India, we believe in the concept of globalization still 1991 जेतेबेले हमर राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थिले सेबेठू हमर ग्लोबल इंडिया को गोटे ग्लोबलाइज्ड कंट्री बोली डिक्लेयर करा हेतला हैला सो ग्लोबलाइजेशन गोटे होची टॉपिक इन इकोनॉमिक्स हैला तो एइटा गुडी तला हम स्कूल लेवल रे पिला मानको हम एटा को पढेबा हैला ताकू जेमति पोवर्टी कोन जानि परथो इट्स अ कॉमन दैट इज हां पोवर्टी काहा को हमें पोवर्टी कहबा पोवर्टी रो गाइडलाइन कोन अछि हां एटा तो जानि परथो ना what is यस मैम poverty line hello how what is the percentage of the people living below the poverty line what is the percentage of people living below who the person who can be called as a poor huh?
सो ए जिंस गुडा एडा मेनली बेसिक कांसेप्ट गुडा हमर स्कूल रे थाए हला सेमती सस्टेनेबल डेवलपमेंट Optimum use of resources. सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो अर्थ होची we will take the use of the resources but we must maintain it and live happily and our generation we must live happily and we can provide the scope to our future generation also to live happily एमिति नुह जे आमे वर्तमान बंची जे आमे प्रत्येक जिंसर सब यूटिलाइज करतबा हमर नेक्स्ट जनरेशन फ्यूचर जनरेशन जे रहबे तांक पय आ किछि नथिबो पानी पवन सब आमे पॉल्यूट कर देइतिबा नॉट लाइक दैट we live by taking the maximum utilization of the resources but we must also maintain okay development of the earth in the different time to time तो ये सब विषय रे एडा जो मेन टॉपिक कोडा को हमें कहूचे जदी एडा को तमरो अछि ए कंटेंट गुडा को तमरो मॉड्यूल रे फोकस करिछि हला एगुडा को पढेला बेले ए हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव कोन नबा तो से माने डिफाइन द टर्म पॉवर्टी ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पिला माने डिफाइन करियो व्हाट इज पॉवर्टी व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओके they will examine the linkages among the three economic issue e tinta jaga jinso kemiti related to each other kene tome mane कहलो how these three topics are related to each other poverty globalization sustainable development tinta jaga related ki nahi Yes, ma'am. kemiti Poverty ରହିଲେ ma'am develop ତ ହେବନି। अरे आमे जदि एबे वर्तमान ग्लोबलाइज कंट्री हेबा फलरे हमर वर्तमान एम्प्लॉयमेंट आमे क्रिएट करि पारुछि लोक मान को बहुत चाकरी मिली पारुछि हैला आउ रेस्ट्रिक्शन किछि नाही फॉरेन कंपनीज मध्ये हमर आसी कि हमर आम कंट्री रे विभिन्न प्रकार इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करूचंती हैला देन हमर जो प्रोडक्ट गुडा को बहुत कम जदि एक्सपोर्ट करके आमे आनुथुले आमे इंपोर्ट करके आनुथले जोडा को अधिक रेट रे कंट्री रे बिका होतला किंतु वर्तमान कंपनी माने आसी कि एठी ही प्रोडक्शन करी तळे एठी ही बिक्री करूचंती कम रेट रे लोक मान को जिंस मिली पारुछि हैला सो डेफिनेटली दिस पॉवर्टी को ग्लोबलाइजेशन नो इंटरलिंक अछि सेमति ग्लोबलाइजेशन हेले भी आमे केवल इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस करिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखिबानी देन वी आर टेकिंग द maximum use of the resources then resources भी दिने सरी जीवो so we must maintain a link between that sustainable develop हवा दरकार globalized हवा दरकार हमर poverty भी eradicate हवा दरकार so ए दिनस गुडा कर लिंक को पिला माने जेमिति से माने ये करि परिबे बुझी परिबे एग्जामिन करि परिबे ओके identify the poor based on the monthly per capita expenditure केमिति monthly per capita expenditure को नै करी हमें poor au rich au amar middle class ame going to define se kotha guda se mane jani paribe state the levels of poverty in states kette prakara poverty achi hela describe how poverty is estimated eta bhul he jai moro suno eta mu dekho describe how poverty is estimated you should not write like that hela kon bhul he koilo eti type kala bele bhul he jai che ke कहबो एटा कोन भूल हेछि जानि परनो ए ऑब्जेक्टिव टारे कोन भूल अछि मते कहलो अरे हमें कहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव केबे भी इंटरोगेटिव सेंटेंस रे रहिबनी एटा हाउ मैम लेखि एटा देछि ता परटारे इंट्रोड्यूस भी हाउ ଆଉ ଲାଗିଛି हाउ लेखा हेछि ता परटारे भी हु एस्टिमेट्स पॉवर्टी व्हाई एडा लेखा हेछि तो ए दिटा भूल अछि एटा को हमें अलगा वे रे लिखि परिबा दे कैन डिस्क्राइब पॉवर्टी ओके और द डिस्क्राइब द रीजंस ऑफ पॉवर्टी हाउ पॉवर्टी इज एस्टिमेटेड न लिखि कि डिस्क्राइब द पॉवर्टी एस्टिमेशन लिखि परिबा हला ए जो ए दिटा रे हाउ व्हाई जो लेखा हेछि वर्ड एटा भूल अछि हला सेमिति explain the meaning of poverty globalization and sustainable development distinguish between poor and non poor हला एगुडा सब लर्निंग ऑब्जेक्टिव अछि आउरी गुडाय लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी लेखिछि नेक्स्ट हमें जिबा टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज हमें
एइथरे कोन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी करबा इकोनॉमिक्स मोस्टली पढेला बेले हम टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी कोन करबा हमर ज्योग्राफी ठू इकोनॉमिक्स रे टिके अलगा रहिबो कोन करबा हम एइथरे जेमिति कि यूज ऑफ मल्टीमीडिया मटेरियल्स है आम ये साइंटिफिक एनालिसिस मल्टीमीडिया मटेरियल्स माने न्यूज पेपर कटिंग नहीं परिबा मैगजीन नहीं परिबा काहे ना हम जानि छी इकोनॉमिक्स ता होची करंट बेस्ड गुड सब्जेक्ट ता हैला तो हमको आर मोस्टली जिनिस गुडा को हमको एइथरे ही मिलिबो आमे नुवा नुवा न्यूज क्लिप्स नहीं परिबा बुलेट्स नहीं परिबा तो एगुडा को ऊपर डिस्कशन हम तो हबो मोस्ट मैडम कोन कहलो डिस्कशन मेथड टा हो तो डिस्कशन डिस्कशन कले मेथड हाँ डिस्कशन डिस्कशन तो कल ना टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज गुडा करे मो एठी लिखि डिस्कशन एंड डिबेट इन द क्लास टॉपिक्स आमे उडे डिबेट कंडक्ट करि परबा डिबेट इज एक्टिविटी हला ग्लोबलाइजेशन द प्रॉस कोन कॉन्स कोन ताकू नेकी उडे आमे डिबेट करि परबा दैट इज एक्टिविटी के पिल्ला मानको कहि परबा न्यूज़ पेपर रु कलेक्शन करिवे ए रिलेटेड टॉपिक जेते बेले अछि आमे न्यूज़ पेपर रु कलेक्शन करि परबा हला किमा न्यूज़ क्लिप्स किछि देखै परबा जोडा को जो नुवा टॉपिक जदि भी किछि अछि ग्लोबलाइजेशन रिलेटेड किछि गवर्नमेंट रो डिसीजन अछि ए सब रो न्यूज़ क्लिप भी देखै परबा तो एमिति आमे एक्टिविटी करि परबा इकोनॉमिक्स रो टिके डिफिकल्ट टू प्रिपेयर द एक्टिविटीज हैला देन नेक्स्ट आसीबा हमारा असेसमेंट क्वेश्चन गुडा को कोन हबो आर असेसमेंट क्वेश्चन रे लिखि छै डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स कोन पॉवर्टी लाइन कोन डिफाइन करिवे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कोन कहिवे पॉल्यूशन कोन कहिवे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोन एफडीआई कोन एमएनसी कोन तमे माने बुझुछो व्हाट इज एफडीआई व्हाट इज एमएनसी नो मैम बुझी पारुने नो मैम फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई रो फुल फॉर्म होची फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जेमति मु कहली फॉरेन कंट्रीज माने आसी की आमो कंट्री रे से माने तांकर निजरो ओन फैक्ट्री तयारी करिवे एबे तमे समस्त सैमसंग मोबाइल यूज करछो ई सैमसंग मोबाइल इज ए इंडियन कंपनी इंडियन कंपनी यस मैम यस नो मैम नो मैम No, no. आउ को कंट्री रो एटा साउथ कोरिया यस साउथ कोरिया ता एबे कोन जे आमे सब मोबाइल करछे से कोन इंपोर्ट हे के आछी साउथ कोरिया रु नो मैम इंडिया रे India रे मैन्युफैक्चर manufacture yes that is called the semane foreign रे तयारी कर हम कंट्री को पठौ ना they already have opened their own industries in our country हैला so that is called as the foreign direct investment it means foreign companies directly they will invest in our country हैला that is called as foreign direct investment किबा आम कंट्री रो भी जो सपोज इंडियन प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज आर दे बट वी हैव लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स हम पाखे पैसा नाही गवर्नमेंट रो माने शेयर नाही खर्च करिया पे फॉरेन कंपनीज दे आर प्रोवाइडिंग सर्टेन परसेंटेज ऑफ मनी टू इन्वेस्ट हैला सपोज को कोन गोटे इंडियन प्रोडक्ट कंपनी रो ना को टाटा इज इंडियन प्रोडक्ट यस और नो यस यस मैम यस मैम yes टाटा मोटर व्हीकल्स माने को टाटा मोटर व्हीकल रे फॉरेन कंट्री माने आसी की तांकर रहइबो 60% इन्वेस्टमेंट अलगा को फॉरेन कंपनी आसी सिते 40% इन्वेस्टमेंट करिवो ओके देन इन्वेस्टमेंट रो अर्थ होची माने टंका खर्च करिवा टंका शेयर करिवा हैला तो सेटा के से माने डायरेक्ट हम कंट्री रे करिबे दैट इज कॉल्ड एज एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फुल फॉर्म ता होची तारो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिमति एमएनसी होची मल्टीनेशनल कंपनीज एमएनसी रो फुल फॉर्म होची मल्टीनेशनल कंपनीज गुडा को जेमती गोटे मल्टीनेशनल कंपनीज माने गोटे कंपनी किंतु सेटा विभिन्न कंट्री रे थिबो हला से माने जेमती मल्टी एबे जेमती हम कहले सैमसंग इज अ मल्टीनेशनल कंपनी तार खाली जे साउथ कोरियन बेस्ड कंपनी बट इट इज देयर इन मेनी कंट्रीज ए सेमिति मल्टीनेशनल कंपनीज माने आसी कि सेमानकर ओन कंपनी खोलिबे ए सब गुडा को कोन कांसेप्ट एडा से माने बुझी परिबे एंड आउ कोन एथरे मेंशन करि छि देखो बहुत गुडा त आसीबो एथरे define the economic issues change illustrate with one example why do definitions of economic issue change ता विषय रे कहि परिबे what is necessary to move from economic development to sustainable development
हाँ ए दिटा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कौन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन तमे मते कहलो व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट मते कहली तुमन ना बुझी परलनी economic development means we will give more focus on industrialization in urbanization economically we grow but that does not mean that we can take the worst utilization of resources. Okay, we should not only focus on economic development. Simultaneously, we can focus on healthy way of living also. Okay, and healthy way of living means maintaining the development in all sectors. That is called as the sustainable development. बुझिपारला आमे इंडस्ट्रियलाइजेशन कथा कहूचे इंडस्ट्रियलाइजेशन इज गोइंग टू ब्रिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट नो डाउट किंतु इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना रे हमर सब वाटर रिसोर्सेस गुडा को पॉल्यूट हे गलानी इज इट गुड टू लिव No, ma'am. yes सेटा हेउची डिफरेंस बुझिपारला वर्तमान इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना रे हमें विभिन्न प्रकार पॉल्यूशन होची वी शुड टेक केयर ऑफ बोथ जे पॉल्यूशन हबनी हेल्दी वे ऑफ लिविंग रहइबो बैलेंस यूज ऑफ रिसोर्सेस रहइबो बट स्टिल वी मस्ट फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जेमते हमें एते इंडस्ट्रियलाइजेशन कथा कहूचे कि एयर पॉल्यूशन ओके अर्बनाइजेशन कथा कहूचे खाली जुआडे हमरो देखिबा आ हमरो कल्टीवेशन नाही सबु एग्रीकल्चरल लैंड इज गोइंग टू कन्वर्ट टू द house purpose so it's not good so like that we must give focus on both economic development and also on the sustainable development ए जिंस गुडाकर भितर डिफरेंस कोन अछि से माने डिफरेंशिएट करि परिबे ए दिटा को इंटरलिंक करि परिबे PPT शो करूनी मैडम ओ नो काई किछि समय पर ऑटोमेटिक कटि जाउ एबे एबे देखि परछ yes ma'am Yes, ma'am. ठीक अछि तो ए सब गुडा को ऊपर तमरो फोकस करे हि ए तमरो मॉड्यूल रे रिगार्डिंग पॉवर्टी आउ तमरो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन हला ए इकोनॉमिक टॉपिक ता ऊपर हमें केमिति लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट करि परिबा एक्टिविटीज प्लान करि परिबा आ असेसमेंट क्वेश्चन हमरो कोन हेई परिबो ओके तो इथर आउरी गुडा म असेसमेंट क्वेश्चन लिखि छी जेमति व्हाई इज पॉवर्टी लेवल मोर इन रूरल एरियाज देन इन अर्बन एरियाज then multinational companies regularize the live people do you agree with that statement question रे लिखा है give the nature of Indian economy today which form of foreign investment is more useful for India okay what is our nature of Indian economy तमे कहलो मते what type of economy we have economic concept Mixed economy. yes we have the mixed economy कौन काहे की को होछ हमर mixed economy why Indian economy is called as a mixed economy कहि परिबनि कि आमे कहले जे that type of economy our Indian economy is mixed in nature भाई काहे कि रहो mixed कहूचे because in our country both the public sector and private sector exist in our economy okay
So there are certain countries which are having only public sector. Public sector माने बुझुचो? Government sector. Okay. So there are certain countries, but the production, consumption, each and everything is only going to regulate by the public sector. So those are called as the socialist economy. But there are certain countries which have only private sector. Everything is privatization. Okay. Then that is called as capitalist economy. Okay. But in our country, we have given importance on both. We have public sector, we have private sector. Okay. So that's why our economy. So we are not a capitalist economy. We are not a socialist economy. So our economy is a mixed economy. बुझिପାରିଲ? Yes, ma'am. ଆମ country ରେ ଅଛି both private sector, government sector. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, in every field we have both public sector and also the private sector. ଆମେ school କହିବା private sector is there, okay, but in all other sectors we have the some public sector and private sector. That's why our economy is not a capitalist economy, not a socialist economy, but the mix of the both. That's why it is called as a mixed economy. ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ? The next ଆମେ ଆସିବା ଆମେ banking ଉପରେ ତମର ବହୁତ ଅଛି ହେଲା bank ଆଉ tax system. Bank system ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝି ପାରୁଥିବ what is bank, what are the different functions of the bank, and what are the different types of bank. Okay. And बहुत गुड़ाए टॉपिक अच्छी बैंक कहले ता अंडर रे बहुत गुड़ाए टॉपिक आसुची तो एथिरे तमर सर्टेन टॉपिक से मॉड्यूल रे देछि सेमति टैक्स सिस्टम ऊपर व्हाट इज टैक्स, व्हाट इज बजट, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, व्हाट इज ब्लैक इकोनॉमी, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट. These all that topics are there in your module. जदि हमें ए टॉपिक गुडा को पिला मानन को पढेबा, then how we will teach, what will be the learning objectives under this. Okay. तो एथिरे हमें learning objectives लिखिची एथिरे भी केतेटा भूल हे जायछि मु मते टाइप कला बेले अछि देखो what why जो लिखाइ छै एटा को लिखा हबनी हला एथिरे learning objective रे किछटा भूल अछि. Describe what banks do, it's a wrong हला learning objective we should not write like that. टाइप कला बेले से मु जाको डाकुथली से टाइप कला बेले भूल कर दिछन एते लिखाइ छै तमे भूल गुडा को करबनी. ओके एटे कोन हितंडा describe the bank. Okay, explain the banking habits ए सब बोली लिखाइ देना. describe how banks create credit. रॉन्ग है जेटा केतेटा बहुत गुडा रॉन्ग है छि एटा सब इंटरगेटिव क्वेश्चन मार्क रे अछि एटा सब भूल हे जाय छि तो किंतु तमे जानि परलो ए वर्तमान आमे सब बोले स्टेटमेंट फॉर्मेट रे लिखिबा. Yes, ma'am. ओके एटा जेमति डिफाइन टैक्स, distinguish between different types of tax, state major sources of tax, okay, recognize some challenges faced by tax. ओके पीपीटी देखा जाउची ना? ଏବେ ସୋ କଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ. Yes, yes, ma'am. ओके ओके तो सी हमार इथरे टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी हमें कोन नबा तो बैंकिंग पढ़ेला बेले हमें बैंक को नेकी गोटे मॉक करि परिबा हला बैंक द्वारा कोन कोन काम करा जाउची तार गोटे मॉक एक्टिविटी करि परिबा. दैट कैन बी एक्टिविटी. मॉक एक्टिविटी माने बुझुचो माने जोटा कि हमें आर्टिफिशियली क्रिएट करूचे
that is called as the mock activity. Okay, माने classroom रे itself we can create a bank. Okay, banking activity करिवा सेमानो को विभिन्न प्रकार बैंक रे केमती पैसा डिपॉजिट करा जाए, विथड्रॉ करा जाए, चेक केमती करा जाए, ए सब विषय गोटे एक्टिविटी क्लास रे कंडक्ट करै परिबा हैला. Credit creation activity can be given the students in the group. किंबा इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट गुडा को भी आमे तांको नेई परिबा, फील्ड विजिट रे नेई परिबा बैंक देखेबा पई. ओके, सेमती चेक केमिति फिलअप करा जाए, चेक को केमिति कैंसिल करा जाए, ए रिलेटेड एक्टिविटी करि परिबा बैंकिंग पढेला बेले. आजिकली तो विभिन्न प्रकार बैंकिंग रो जेमति आसलानी यूपीआई केमिति यूज करि परिबा सिखै परिबा. It is different activities. We whenever according to the topic, as a teacher we can take the different innovative activities to teach the content. Then our related questions ame kon pachariba, assessment questions kon he paribo. What is bank? Define bank. Describe the different definitions. Describe the different functions of the bank. Differentiate between different type of deposit. Distinguish between PAN and TN. Suppose you applied level of question with it. Suppose you are a farmer, which account you use to open and why? Okay. Then suppose you are a vegetable vendor, which account you prefer to open? Kind of different types of deposit. What is current account? What is saving account? What is recurring deposit? What is fixed deposit? Then applied level of question they can pachari pariba. Okay. So assessment question. Both would I ye korichi. Black economy कौन? तमे कहिला what is black money? Different types of tax विषय रे भी. Black money कौन रे? Without tax रे जो money टा थाए. हाँ? जो money टा रो tax दिया न जाए. ସେଟା ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି. Yes. Black money also, if you are going to earn money illegally also, that is called as black money. Okay. It means which is the hidden money, that is called as the black money. जेमति तमे कहला tax evasion. Suppose we are living in a country where we know that there is the government is going to impose the different types of tax, but we are not going to show our income to the government. Okay, and that is called as the hidden money, and we are earning those money in a illegal way, so that is called as the black money. Okay, so it is a crime in our country. In our country, according to the rules and regulations, black money is a crime. तम जन जानचो जते भाई से businessman हुअन्तु कि service holder हुअन्तु, if the black money is there and tax evasion is there, then we are going to pay the कौन? आपे कौन हुए? Vigilance लागिबो, तुमको jail होबो. Okay, so सेमती different tax कथा. Tax कौन जानिचो? Tax कौन बुझुचो? ये कहबो कौन tax कौन? Different types of tax कौन? Income tax, commodity tax. Tax होची कौन? The money imposed by the government in the different form. Okay, legally, the money legally imposed by the government in different form from the peoples of the country or from the citizens, then it is called as the tax. किंतु tax भी दी प्रकार अछि. गोटे होची direct tax, गोटे होची indirect tax. ହେଲା, what is direct tax, what is indirect tax? ଜାଣିଛ କିଛି? डायरेक्ट टैक्स आउ आमे जो जो टैक्स गुडा दउछु सेगुडा सब आमे every moment आमे टैक्स दउचे गवर्नमेंट को, but we are unaware about it. Suppose you are purchasing a pen, गोटे पेन टे किनलो, सेइथरे भी तमे गवर्नमेंट को टैक्स देइछो. ହେଲା, जे कोनोसी जिनिस आमे किनुचे मार्केट रु, ता सेइथरे मध्ये आमे किछि टैक्स गवर्नमेंट को दउचे, but we do not know about that. So that is called as a indirect tax. ହେଲା, किंतु directly we know that we are paying the tax. जेमति income tax, wealth tax, sales tax. Tax system is very complicated in our country.
सो सेटा को हमर बे सिंप्लीफाई करिया पई मध्ये हमर VAT हला वैल्यू एडेड टैक्स हला एबे जीएसटी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय गुड्स एंड सर्विस टैक्स is introduced by the government. So different types of tax ଆଉ କଣ ପ୍ରତି tax ର purpose କଣ ଆମେ ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମର ମୋଷ୍ଟଲି ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲ ରେ ପିଲାଙ୍କୁ अवेयर କରିବା ଦରକାର ହେଲା what is cash reserve ratio, what is excise duty, what is value added tax ए सब गुड़ाक कॉन्सेप्ट तमरो ए मॉड्यूल रे अछि तमे जेटा पढिला परे एडाको मध्ये आमे पिलांगु पढेला बेले आ रिलेटेड एक्टिविटी कोन करिबा आकु केमिति क्वेश्चन रे दबा कैश रिजर्व रेशियो कोन कहलो मते कोन बुझुचो इकोनॉमिक्स टॉपिक गुडा टिके तुमको पढिया को पड़िबो जदी तमरो ये न माने ये अंडरस्टैंडिंग नाही ताकू गुडा टिके बुझिया को पड़िबो काइना एडा हमर स्कूल लेवल रे भी आज पर्यंत इंक्लूड हेइनी बे वर्तमान इंग्लिश मीडियम स्कूल रो इकोनॉमिक्स गुडा करे एडा को इंक्लूड होउची किंतु हम स्टेट गवर्नमेंट बुक्स गुडा करे एडा का नाही वर्तमान पर्यंत ये कहि परियो व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो जो आमे बैंक रे टंका डिपॉजिट करूजे से सब टंका गुडा कोन बैंक रे सब बेले रहूची नो मैम कोन करूची बैंक शेयर मार्केट रे इन्वेस्ट करा होची बैंक मध्ये डिफरेंट वे रे इन्वेस्ट करूची बैंक लोक मान को ऋण दे दोची लोन दे दोची किबा बैंक रो भी इन्वेस्टमेंट अछि बैंक तारो रिजर्व बैंक रे डिपॉजिट करी कि बैंक रे केते अमाउंट डिपॉजिट करिवो हला तो किंतु किछि अमाउंट ऑफ मनी बैंक खाते रहिया को पड़िबो फॉर दैट देयर इज ए परसेंटेज एंड दैट मनी व्हाट द बैंक इज गोइंग टू मेंटेन दैट इज कॉल्ड एज द कैश रिजर्व रेशियो हला सेमते ए कांसेप्ट गुडा जहा जहा अछि टिके भल्ला रे टिके पढिबो इकोनॉमिक्स कांसेप्ट गुडा अंडरस्टैंडिंग नाही हला ओ बैंक रो फंक्शन गुडा को कोन बर्तन से विषय रे जानिथिबो व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बैंक यस मैम के कहिलो गोटे जणे व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बैंक deposit, withdrawal, हम मनी सेविंग किछि काम ही करूची बैंक आउ बैंक रो किछि काम नाही लोन चेक टू लोन हां बैंक बैंक give रे loan, हमर डिपॉजिट रखुची बैंक बैंक हमको लोन दोची ता छोडा आउ कोन काम करूची आरडी एफडी जो आरडी और फिक्स्ड सेटा तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट रे आसला हां आउ कोन काम करूची इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दे ornament locker ornament yes locker bank is also providing the insurance okay that is another duty okay and we are going to open our locker in the bank amaro सब प्रॉपर्टी रो कस्टोडियन पे हमर लॉकर को मेंटेन करूची सेमते आउ कोन करूची मनी एक्सचेंज yes money exchange भी करूची तो डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बैंक्स आर देयर हमें एडा सब पिला मानन को सेडा को विषय रे अवेयर करेबा दरकार और लोन भी कहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स आर देयर कोन कोन लोन आछी जानिछ कहलो एग्रीकल्चर लोन पर्सनल लोन होम लोन गोल्ड लोन yes personal loan home loan business loan agricultural loan gold loan education loan ना तो विभिन्न आजिकल विभिन्न नुआ नुआ सेक्टर आसलेने जोथरे कि हमको विभिन्न पर्पस पय मध्ये बैंक हमको लोन दोची बैंक इज आल्सो गोइंग टू सेल द गोल्ड आल्सो सुना बिक्री करूची मध्ये बैंक ना दैट इज आल्सो ए वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द बैंक आमे जे केवल सुना दुकान सुना किनुचे ता न गोल्ड बैंक रे भी गोल्ड बिका होची जानिचो कि नहीं
ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ସେ ଯୋଉ ପୁରୁଣା Yes, that ଗହଣା ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଗହଣା ନା ରଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ପୁରୁଣା ଗୋଲ୍ଡ ନାଇଁ, ପିଓର ନୁହଁ ଗୋଲ୍ଡ। ନୁହଁ ସେ ପିଓର ଗୋଲ୍ଡ ଯୋଉ ଯୋଉ ମ୍ୟାମ୍ କଏନ ଯୋଉ କହନ୍ତି ବିସ୍କିଟ ଆକାର ଭଳିଆ ଯୋଉ ବିସ୍କିଟ ଆକାର ଭଳିଆ ଯୋଉ ପୁରା ଗହଣା ଟୋଟାଲି ଥାଏ ଇଏ ସେଇଟା ହେଇଥିବ। ଯୋଉ Bank is not going to sell the ornaments ବିକ୍ରି କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ଗୋଲ୍ଡ କଏନ ତମେ ଯୋଉଟା 24 କ୍ୟାରେଟ ର ପିଓର ଗୋଲ୍ଡ ର କଏନ ମଧ୍ୟ ତମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ରୁ ଆଣିପାରିବ। ଓକେ, ଆଉ ଆମକୁ ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ ବି ବ୍ୟାଙ୍କ ଦଉଛି। ଆମର ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଆମର ନିଜ ସୁନା ରଖିକି ବି ଆମେ ଗୋଲ୍ଡ ଉପରେ ଲୋନ ଆଣିପାରିବା, ହେଲା। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋନ ସେଇ ଦଉଛି, ଏ ଗୋଲ୍ଡ ସବୁ ଗୁଡାକ ଗୁଡାକ ଏମିତି ତମର। ବିକ୍ରି କରୁଛି। କଣ କହୁଛ କି କିଏ? ମ୍ୟାମ୍ ସେ ଯୋଉ ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ ଆମେ ଯୋଉ ଆଣିଥାଉ ଗୋଲ୍ଡ ରଖିକି ସେଇ ଗୋଲ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କେହି ହଁ, ନ ସେ ନେଇ ଗୋଲ୍ଡ ଗୁଡାକ ବି ବିକ୍ରି ପାରିଲେ ହେଇଥାଏ। ଟଙ୍କା ଦେଇକି ହଁ ହଁ, ତାଙ୍କର ଯଦି ସେଇଟା ରହିଗଲା, ସେମାନେ ଯଦି ନ ନେଇ ପାରିଲେ ସେଟା ବି ବିକ୍ରି ହେଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। Okay. So there are different functions of the bank and different types of tax system. एगुड़ा तमरो मनी तमरो इकोनॉमिक्स पार्ट रे आसुची आउ तापरे आउ कोन अछि एति इकोनॉमिक्स रो माइक्रो स्किल्स गुडा भी अछि। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल कोन ना बैंक रे how to calculate the per capita income, how to calculate the GDP, GNP, ए सब विषय रे भी अछि। बजट और टैक्स विषय रे। बजट कोन जानिचो? व्हाट इज बजट? बजट कोन कहबो? तीन थर बसिଥାଏ मैडम बजट। ସିଏ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ର ବର୍ଷରେ ଥରେ ବସିଥାଏ ଆଉ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ତାର ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କରାଯାଏ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ବଜେଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। Yes, ଯେମିତି ଆମେ ନିଜର own budget ତିଆରି କରୁଛେ regarding our income and expenditure. Every year government is also going to prepare a plan regarding income of the government and expenditure of the government, and that is called as the budget. Okay, the plan regarding the income and expenditure of the government for a particular financial year is called as the budget. Okay, every state government and also central government is going to prepare their own budget. अरे म्यूट करो, किए कथा होचो, किए कथा होचो, म्यूट कर दियो हैला। तो दैट इज कॉल्ड एज द बजेट। सेमति बजेट रे हमें देखुचे जे हमर होची गोटे सरप्लस बजेट आ गोटे होची डेफिसिट बजेट। कोतलो हमें कहबे सरप्लस बजेट, केतले कहबे डेफिसिट बजेट। ଯେତେବେଳେ expenditure ଅପେକ୍ଷା ଇନକମ୍ ଅଧିକା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସରପ୍ଲସ ବଜେଟ। Yes, when government income exceeds the government expenditure, then it is a surplus budget. And the exact opposite of it is called as a deficit budget. What is the government income? Government कोठु income पाए? टैक्स every टैक्स रो kind मैडम of tax By imposing different types of tax. How? सर्विस प्रोवाइड करे जो सेथिर भी पाए। Yes, from the service provide, from exports and imports. जहाँ हमर आम कंट्री रु अलगा कंट्री को हम एक्सपोर्ट्स करूचे तार भी जो क्षेत्र जो लाभ हुए सेटा भी गवर्नमेंट रे इनकम। तो डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम आर देयर, ओके, एंड दैट इज कॉल्ड एज द पब्लिक फिनांस। That is called as the finance of the government, public finance. Okay, and according to that government is going to represent the expenditure. Okay, and we always believe in a balanced budget. What is balanced budget? If both public income and public expenditure is exactly equal, then it is called as a balanced budget. Not a surplus budget, not a deficit budget. It's called as a balanced budget. So these are the just the basic economic concepts जोटा कि तुम्हारा स्कूल लेवल रे एडा को आसी पाए। ठीक, एबे वर्तमान वैल्यू एडेड टैक्स कोन, जीएसटी कोन, ए सब विषय रे जानिचो। टैक्स सिस्टम में जेम हमें कहले कथा ले इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। Again, there are different type of income tax, wealth tax, gift tax, sales tax, okay, tariff duty, import duty,
एटा होची डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स एबे नुआ सिस्टम हमर वर्तमान एबे अछि कोन जीएसटी जीएसटी कोन कहिलो कोन बुझिचो गुड सर्विस टैक्स जोड़ा मैडम हमर द्रव्य जो प्रोवाइड करूची गवर्नमेंट सेइथरे टैक्स यस तुमे भी देखो तुमे पैसा डिपॉजिट कले मध्ये तुमको सेइथरे जीएसटी दबा को पडुची okay not only the tax we are going to pay for the at the time of purchasing the good when we are availing some service also at the time we are paying the tax तमे बैंक रे टंका डिपॉजिट कले मध्ये सेइथरे तमरो जीएसटी कटुची कि नहीं यस मैम तमे देखिबो इंश्योरेंस रे जदि तमे पैसा डिपॉजिट करूचो तमे सेथरे केते परसेंट जीएसटी देबा को पड़े एंड डिफरेंट लेवल ऑफ परसेंटेज ऑफ जीएसटी इज दे को काम पई केते परसेंट जीएसटी देबा को पड़िबो सेथि पई गवर्नमेंट रे डिफरेंट रूल्स और रेगुलेशंस अछि so on the basis of it for everything for purchasing the good and for availing the service we are paying the tax okay that's called as the goods and service tax ହେଲା ଏବେ जेटा न्यू फॉर्म ऑफ केबेटु होला इंट्रोड्यूस जीएसटी 2017 में जुलाई 2017 यस हमरो 2017 ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2016 मैडम 17 नुहे मैम 16 मिला 17 17 16 मैडम नो मैम नो 17 17 में इम्प्लीमेंट ହେଇଛି ବୋଧେ 17 ରୁ 16 ରେ ବୋଧେ डिमोनेटाइजेशन डिमोनेटाइजेशन एक्ट आसला 2016 रे मैडम ओके 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 व्हाट एवर मे बी 16 की 17 हमें देखि दवा तमे ऑनलाइन रे देखि दव चेक कर दव केबेठु इम्प्लीमेंट हैला ना ओके तो एगुडा को विषय एडा का दीज आर द मिनिमम अंडरस्टैंडिंग एवरी चाइल्ड आल्सो मस्ट नो अबाउट जुलाई 1 2017 ରୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ହେଲାଣି अच्छा એટલે ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ଆଗରୁ ଥିଲା ପ୍ଲାନ୍ କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଧେ 17 ରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଛି କାହିଁକିନା 16 ରେ ଡିମନିଟାଇଜେସନ ହେଇଥିଲା 2016 ରେ ଡିମନିଟାଇଜେସନ ହେଇଥିଲା बट डिमोनेटाइजेशन माने गुड कोन एंड बुझियो सर्विस टैक्स एक्ट टा 2016 रे आसला ना मैडम हां हेइथिबो हमर मु भी एग्जैक्टली कंफर्म नो 16 रे आसीथिबो किंतु 17 रे बोधे इंप्लीमेंट ହେଇଛି हमर जोडा कार्यकारी ହେଇଛି बोधे 2017 ରେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି 17 ରେ इम्प्लीमेंट होती है ओके ओके सो एक्ट रे भी डिमोनेटाइजेशन 2017 ଅଛି हां डिमोनेटाइजेशन कोन काहे की करा जाय डिमोनेटाइजेशन दिस इज आल्सो ए इकोनॉमिक कांसेप्ट ओके so एगुडा के सब होची बेसिक कांसेप्ट एट द स्कूल लेवल फॉर आवर चिल्ड्रन आ एगुडा ए विषय रे हमरो आमे तेडा को हमरो कंटेंट क्लैरिटी रहिबा दरकार विथ दैट वी कैन प्लान द ऑब्जेक्टिव्स असेसमेंट क्वेश्चंस एंड लर्निंग एक्टिविटीज हला बुझि परलो देन नेक्स्ट आमे जोडा मु भी पचारथली आमे काली जस्ट अल्प डिस्कशन करथिले माइक्रो स्किल से विषय रे टिके डिस्कशन करिवा हला केतेटा माइक्रो स्किल अछि के कहबो पीपीटी देखा जाउची नो मैम माइक्रो स्किल लो पीपीटी नो देखा मैम जाए नहीं माइक्रो स्किल रो मु देखैनी तुमको आउरी मु तुम पचारुची कुह काली आमे जस्ट टिके टिके डिस्कशन करथिले मु किंतु काली कहिदिले जे हम आसंता काली डिस्कशन करिवा माइक्रो स्किल विषय रे कि मते तमे कुह केते प्रकार माइक्रो स्किल अछि काली आमे डिस्कशन करथिले टीचिंग इटसेल्फ इज ए स्किल and it is a macro skill and that teaching is going to cover many micro skills आ से माइक्रो स्किल गुडा को कोन आ से सब स्किल रे एज ए टीचर हमर केमिति मास्टरी आसीबा दरकार आ को पर्पस पई हमें सेडा करू छे केतरा माइक्रो स्किल अछि के कोइ परिबो मैडम एक्सप्लेनेशन स्किल skill of questioning yes preparation of TLM yes using blackboard using yes classroom class management evaluation प्रेजेंटेशन ओके ओके तमे सब स्किल कहउछो किंतु तमे तार हायरार्किकल ऑर्डर रे कहउनो हला कोउटा परे कोउटा रहिबा दरकार को स्टेज रे कोउटा रहिबा दरकार एक्चुअली माइक्रो स्किल रो फादर होचनी हमर बीके पासी ना बीके प्रोफेसर बीके पासी इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रो स्किल and according to him the major 9 micro skills are there केले नॉट आमे माइक्रो स्किल कथा से कहिचंती
से जो 9टा जाक स्किल रे एवरी टीचर हैव मास्टरी ओवर इट यस आ से स्किल गुडा को इठे हमें डिस्कशन करबा फर्स्ट इज दैट स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन काली मु कहूतली व्हाट इज स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन हमें इंट्रोड्यूस केमिति करबा दरकार प्रत्येक लेसन को हमें केमिति इंट्रोड्यूस करबा दरकार ता ऊपर एवरी टीचर कर मास्टरी आसीबा दरकार ओके देन तापरे आसला हमर स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन विथ एग्जांपल्स प्रत्येक जिंस को एक्सप्लेन करी पढ़ेला बेले तार एप्रोप्रिएट एग्जांपल दे परिबा हला ताकू रिलेवेंट एग्जांपल दे परिबा दैट इज आल्सो ए माइक्रो स्किल देन स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग एवरी स्टेज रे हम जेमति कहले हम एवरी स्टेज रे हम क्वेश्चन पचारुचे इंट्रोडक्शन स्टेज रे क्वेश्चन पचारुचे प्रेजेंटेशन रे पचारुचे इवैल्यूएशन रे पचारुचे क्वेश्चन तयारी करिया मध्ये होची गोटे स्किल स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग सेमती स्किल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एड एप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग मटेरियल केमती तयारी करबा अट्रैक्टिव हेतियो पिलांका साइकोलॉजी को बेस करके हेतियो केमती टीचिंग एड तयारी करबा दैट इज आल्सो ए स्किल सेमती यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड इज ए स्किल माइक्रो स्किल आम पाखरे बोर्ड अच्छी but how properly systematically we can take the use of the board is a micro skill सेमती पढ़ेला बेले आमे पिला मन को रीइंफोर्स करबा दरकार एंड तांको केमिति मोटिवेट करिया पे हम विभिन्न प्रकार रीइंफोर्समेंट यूज करबा दैट इज आल्सो ए माइक्रो स्किल स्किल ऑफ यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट सेमती स्किल ऑफ गेस्चर एंड पोस्चर क्लास रे पढ़ेला बेले आमे केमिति हमर नॉन वर्बल बिहेवियर रहिबो आमे केमिति ठिया हबा कोठी ठिया हबा पिला मानक सहित हमर फेशियल एक्सप्रेशन हमर बॉडी लैंग्वेज केमिति होबा दरकार फॉर एवरीथिंग देयर इज द एथिक्स एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ए स्किल ऑफ गेस्चर एंड पोस्चर देन नेक्स्ट स्किल ऑफ इवैल्यूएशन इवैल्यूएट केमिति करबा टेस्ट केन डेवलप करबा क्वेश्चन केमिति डेवलप करबा क्वेश्चनरी कला बेले कोन कोन रूल्स एंड रेगुलेशन अछि से विषय रे अवेयर होबा दैट इज आल्सो ए स्किल लाइक स्किल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट पिला मानकु क्लासरूम रे केमिति मैनेज करबा so these all are the micro skills and by taking all these micro skill teaching itself is a major skill आ प्रत्येक टीचर कर ए सब गुडा का माइक्रो स्किल को आमे प्रैक्टिस करबा दरकार ओके आता ऊपर हमरो मास्टरी आसीबा दरकार हला तो these are the micro skill and we must focus how we will practice it ला जेमति कहले स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन विथ how we can prepare these all the contents with appropriate examples जेतले हमें नुवा कंटेंट गोटे पढिया को जाउछ हमें से जागा रे केमते एग्जैक्ट गोटे भलो जदि सपोज हमें टैक्स विषय रे पढिया को जाउछ टैक्स रे केमते गोटे भलो एग्जांपल टा हमें देई परिबा पिला appropriate related to your content okay we should must plan about it सेमिति टीचिंग एड रो एटा टिके डिस्कशन करिया हाउ वी विल यूज द ब्लैक बोर्ड केमिति यूज करिया तमे निजे को मते ब्लैक बोर्ड हमें केमिति यूज करिया दरकार न्यू टर्म जो गुडा थी बसे गुडा टिके लिखि देबा आगो प्रथमे ब्लैक बोर्ड पाखरे हमें केमिति ठिया हबा ब्लैक बोर्ड रे लिखिला बेला हमें केमिति ठिया हबा दैट इज आल्सो प्रथमे तो मैम जो पटे दर सूर्य किरण पडुतो सेही भଳି स्थान नो ब्लैक बोर्ड रे ठिया लिखिला बेले हमें पिला को केबे भी पूरा पछ होबा नाही हमें 90 डिग्री एंगल रे ब्लैक बोर्ड पाखरे ठिया हबा हां 90 डिग्री एंगल रे ठिया हबा हम हाथ जेते दूर पर्यंत पहुंचुची सेति की लंबार सेंटेंस ही लिखिबा यदि तमे ताठू अधिक लंबार सेंटेंस लिखियो माने तुमको ऑटोमेटिक पछ होबा को पड़िबो हला तो हमें कोन करबा जति बहुत बड़ बोर्ड अछि हमें बोर्ड टाको गारो टाणी की डिवाइड कर दबा दि भाग तीन भाग रे डिवाइड कर दबा हला सब बेले बेसी लंबा सेंटेंस लिखिया पई अवॉइड करबा बेसी लंबा सेंटेंस लिखले सेंटेंस भी बंका हबो प्लस पिला माने भी कंफ्यूज हेबे आ हमें पूरा पछ होई के लिखिया को पड़िबो तो हमें ब्लैक बोर्ड को विभिन्न गारो टाणी की डिवाइड दि भाग कर दबा कि तीन भाग कर दबा बोर्ड को देखि जदि बहुत बड़ बोर्ड अछि आ 90 डिग्री एंगल रे ठिया हबा हम हाथ जेते दूर पर्यंत पहुंचुची सेति की दूर पर्यंत ही हमें लिखिबा ओके देन अगेन आसला हमरो जेतेबेले हमें लेखुचे हमें लिखियो हाफाजेडली लिख दो एठी गोटे पॉइंट सेठी गोटे पॉइंट नॉट लाइक दैट हमें जेतेबेले बोर्ड को डिवाइड कर दे जे गोटे पार्ट यूज करबा हमर किछि ड्राइंग करिया पई माने को हमें मैथ टीचर अच्छे प्रॉब्लम करिया पई गोटे पार्ट आ तार रिलेटेड फार्मूला लिखिया पई आ गोटे पार्ट यूज करबा हला किबा तमे साइंस पढो छ किछि ड्राइंग करिवार अछि गोटे पार्ट बोर्ड रो यूज करिया केवल ड्रॉ करी कि लेबलिंग करिया पई
आ एक्स्ट्रा जहाँ इंपोर्टेंट कंटेंट जहाँ लिखुछ गोटे पार्ट को यूज करिबा सेमती सोशल साइंस पढ़ेला बेले तुम बुक रो जहाँ पढ़ौछ ताकू गोटे पार्ट रे लिखिबा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जनरल नॉलेज किछि दोचे ताकू आ गोटे पार्ट रे लिखिबा हला कि मैं मैप ड्रॉ करिचे गोटे पार्ट रे हमें मैप ड्रॉ करिबा सो लाइक दैट वी मस्ट टेक द सिस्टमैटिक यूज ऑफ द बुक ओके सेमिति बोर्ड लिभेबार मध्य बोर्ड रे चॉकपीस केमिन धरिया दैट इज आल्सो ए स्किल हाउ वी विल होल्ड द चॉकपीस हमर लेखिला बेले देखियो बहुत जण लेखिला बेले साउंड आसे ओके वी शुड अवॉइड इट we should use the chalk in such a way that it will not create the sound ହେଲା सेमती केते जण लेखिला हमने बहुत लाइटली लेखिथिबे बिल्कुल पिला को देखा जाउ नथुओ तमे बोल्ड लेखिबा जेमती माने प्रोमिनेंटली देखा जीवो पिला मानकू साइज ऑफ द हैंड राइटिंग आमे जेमती खाता रे लिखुचे सेमिति हैंड राइटिंग रे लेखिबानी बोर्ड रे हमर एप्रोप्रिएट साइज ऑफ द हैंड राइटिंग मस्ट बी देयर ହେଲା हमर एप्रोप्रिएट साइज ऑफ द हैंड राइटिंग मस्ट बी देयर सेमिति बोर्ड लिभेला बेले आमे कोपटू कोपटे लिभेबा कहलो मते तमे जदि तमे बोर्ड पटे मुंह ଉପରୁ करिके ठिया ତଳକୁ होछ लिखଉଛନ୍ତି। यस आमे ବାମରୁ तमरो ଡାହାଣକୁ। हां जदि बोर्ड पटे मुंह करिके रहिछ ताहाले डाहाणरू बामकू नाही जदि एपटे मुंह करिके छ ताहाले आमे बामरू डाहाणरू बामकू हैला तो जुपटे लेखिछ तार अपोजिट वे रु आमे लिभेबा आरंभ करिबा हैला so these are the certain skills how to take the use of the black book सेमती gesture and posture को तमे आमे केमिति ब्लैक पढेला बेले आमे कोठी ठिया हवा दरकार हमर सब पिलांक सहित आई कांटेक्ट हवा दरकार आमे सेंटर ऑफ द क्लास रे ठिया हवा दरकार सब पिलांक सहित हमर आई कांटेक्ट हवा दरकार आ पढौछ हमर देखे पिला टीचर माने फ्रीक्वेंटली मूव करथुए क्लास रे आगो को पछकू it must not be आमे सेमिति बुलिवा कथा न it will create a disturbance for the children केतेले क्लास रे बुलिवा दरकार जेतेले आमे किछि काम देइचे पिला माने करूचंती आमे तांको देखिबार अछि सेतेले आमे क्लास रे बुलिवा किंतु जेतेले आमे एक्सप्लेन करूचे पढौचे आमे सबले तांको फ्रंट रे ठिया आइकी समस्तन सहित आई कांटेक्ट मेंटेन करिके हमकु पढेबा दरकार आ पिला मानकु चाहिमा दरकार बेले बेले टीचर माने पढुथिबे देखियो कांथो को चाहिबे कोडा अलगा चाहुजे पिला मानकु केबे चाहुनथि दैट टीचिंग हैज नो इफेक्ट ओके से मानकु चाहिकी पढेबा दरकार सो दीज आर द सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस रिगार्डिंग गेस्चर एंड पोस्चर क्लासरूम मैनेजमेंट क्लासरूम केमती मैनेज करिवा आमे जानिचे हमर क्लास रे को पिला मानको आगे बसेवा दरकार का को पछरे बसेवा दरकार को पिला मानको ऊपर अधिक फोकस दवा दरकार ओके जेमती लाइट आसुची कोपडो सेपडे आमे केमती वेंटिलेशन क्लास रही परिबो ऑक्सीजन आसी परथुबो क्लास को आ बेसी क्राउडेड क्लास नेले भी हमर क्लासरूम मैनेज केबे हेई परिबोनी नंबर स्टूडेंट टीचर रेशियो हमर प्रॉपर्ली मेंटेन हवा दरकार ला पिला मानकर बसिबा कंफर्टेबल हवा दरकार then only tomar padheba effective hobo these all are the certain techniques to for the good classroom management ei sabu jinso uda kare bi ame care naba darkar pila manankar sitting posture semane kemiti bosichanti tako pai sufficient place the ventilation oxygen all these things era madhya ame as a teacher we must arrange for the class that is called as the good classroom management so ei jo micro skill guda ko कहली ei micro skill guda को आमे सब बेले प्रैक्टिस करबा दरकार ए प्रत्येक माइक्रो स्किल ऊपर हमरो मास्टरी आसीबा दरकार बुझी पारलो समस्त माइक्रो स्किल कोन आगरु आगरु पढाई तिला के गुडा को विषय रे को पेपर रे भी नो मैम ओके ठीक अछि को आ 5-7 मिनिट तो अछि हम पके टाइम भी नाही को तमरो कोन जदी भी आज भी जहां भी डिस्कशन करले सब तो हमें डिस्कशन करि परिवानी ऑलरेडी कहिची कंटेंट बहुत गुडाई थिला तो किंतु जहां भी डिस्कशन करले आ जदी किछि एक्स्ट्रा किछि तमरो डाउट अछि कोन पचेरो मैम ए जो क्लासरूम मैनेजमेंट रे जो रेशियो टा ठीक रखिबा एटा तो आमो हाथ रे हेई ना हेई परबोनी जानी चीजे सेटा खाली तमो पे नुहो सेटा स्कूल हैज टू टेक केयर ऑफ इट किंतु तमे निजे फील करिवो जे जदी तमरो ओवर क्राउडेड क्लास इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द क्लासरूम हां कि नहीं हां मैम देन तमे केते भलो पढेले भी तार से पढार किछि इंपैक्ट रहिबो नाही पिला मानको ऊपर दैट इज आल्सो ए फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंस योर टीचिंग आउ किछि को आउ कोन जदी किछि डाउट अछि मैडम डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस सेटा टिके खाली जस्ट टिके डिसिप्लिन ऑफ ओढिया सोशल मैडम साइंस कहबी
डिसिप्लिन ଆଜ୍ଞା ऑफ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। सोशल साइंस अर्थ होची सोशल साइंस अंडर रे कोन कोन आसुची एटा के हमर प्रथम दिन थिला मॉड्यूल 1 रे हां अच्छा से जो ନିହାତି मॉड्यूल 1 रे जो थिला हमर डिसिप्लिन मुख्यतः स्कूल रे हमर सोशल साइंस अंडर रे कोन कोन आसुची आमे कहले हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एगुडा कहूची हमर मेन डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंस किंतु सोशल साइंस अंडर रे हमर साइकोलॉजी भी आसुची हमर एंथ्रोपोलॉजी भी आसुची आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी आसुची तो सोशल साइंस इज ए मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट हाँ सोशल साइंस इज ए सब्जेक्ट इट हैज टेकन द कंटेंट फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन किए पचारुथिलो बुझिलो ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। एटे डिसिप्लिन रो अर्थ होची गोटे सब्जेक्ट हैला डिसिप्लिन नॉट डज नॉट मीन द रियल व्हाट वी मीन बाय डिसिप्लिन हैला एटे डिसिप्लिन रो अर्थ होची डिसिप्लिन होची गोटे सब्जेक्ट रो स्टेटस को हम डिसिप्लिन बोली कहू मैम जो थिला रिलेशनशिप